One slip is in position. You got a gully. You have a... Not a gully, sorry. It is a long on, long off. I need to gather my thoughts here. So once again, let's go through what's happening out there. Sohail Khan, as we know, that will bowl the new ball. Today, Saud Shakil said that he gone in with an extra pacer. He's also one of the entries in the 11. Saud Shakil says, new combination, 4 paces and a spinner. Abrar's not available, so Zahid Mahmood will lead the spin attack. Part-timers can be Saim Ayub and Danish Aziz. And then you have Anwar Ali back in the side. That adds the all-rounder factor that they were missing. The hard hitting if required later on. So there are 4 changes, you're saying, Ali? Yep, because Mir Hamza was rested for the last game. He's making a comeback. Ghulam Mudassir, he's missed out on this game. He was given the opportunity. Swing early on that we usually see from Sohail Khan. One slip. Sarfraz Ahmed and Shajil Khan very determined. They want to win this one. They want to qualify for the final. This is the big game. Leg by straight away. It's very surprising, captains, when they come to the toss. I don't expect them to know the names of all the changes in and out, but at least know how many changes. 4 changes. It's very misleading. So I will try to run you through. This was the appeal going down the leg side. So we see that Saad Ali is out, Farhad is out, Ghulam Mudassir is out, and Abrar has left for national duty. These are 4 not playing. Umair bin Yusuf comes in, Danish Aziz comes in, Anwar Ali comes in, and Mir Hamza comes in. It's a careful start by the openers from Central Punjab. They know the importance of that early start, early good start. Those first 6 overs they need to utilize. Faizan and Ikhlaq, similar sort of players. They like to go big, but Faizan has been more effective. He scored runs, couple of 50s in this tournament. And since the time he has joined Central Punjab, it has all changed for them because of that early good start that he provides. On the other hand, Akhlaq is due some runs. But this be the match. A change of pace. Bit of movement as well. Yeah, the changes we were talking about. Mir Hamza comes back, Anwar Ali, Danish Aziz and Umair bin Yusuf. They've left out 2 left-hand batters in the middle order, Faraz and Saad Khan. Abrar also joining the Pakistan side. Ghulam Mudassir missing out. First over done. Central Punjab 2 for no loss. Left arm bowling over. Mir Hamza, he would look to swing the ball early on. He's been such a good bowler all for these years for Sindh. 49 wickets. Economy 8.14, best of 4 for 9. And we know that if he gets that ball swinging, it will be very difficult for these 2 hitters. Mir Hamza has started making his name in white ball cricket, because if you see the number of matches, his and Arshad Iqbal's matches are almost the same, 50. But Mir Hamza has been around for a while.
You're talking about the teams just a while ago. If you look at Central Punjab team, there's a strange bit of change. Ali Asfand is out, and Osama Mir is in with 4 left-handers in the Sindh stop order. And if you remember, last time around, Osama didn't get over. He didn't get to bowl. Has come in. They come in sharply. Abdul Razak feels that he will be their option when required. I probably can give him an over, but he didn't get an over last time around, so I'm just judging from that aspect. Because against Sindh, they didn't bowl him. Swing. That is what you know Mir Hamza can do. Well, I don't know it will make such a huge difference because Ali Asfand is the left arm spinner, Osama Mir the leg spinner. Shot. First boundary has to come from Faizan's bat. He's been in form for the Central Punjab team. Stand and deliver. Nicely timed by Faizan. He's the man in form for Central Punjab. Waited enough. That nice use of the wrist in the end, earning him a boundary. Wow, what a ball. Full in length, and he was trying to play on mid-wicket zone. Passing that outside edge. Lack of pace on it, I felt. Clever. Just rolled his fingers maybe on it. Look at that. Coming back to that central point you were talking about. They've got plenty of options. They've got 2 off spinners, Shoaib Malik, Qasim Akram himself, and they heavily rely on their pace bowling. But Osama Mir will get a bit of bounce on this pitch. That is the reason that they might have changed. Quick run, good run. Yeah, my only concern is that will they get an over? Osama didn't get an over. Ali Asfand got 2 overs in the previous game. You're right about that against Sharjeel, Saim Ayub, Danish Aziz, Saud Shakil. They will probably have Shoaib Malik's experience with off spins. Qasim Akram, they did that last time around. They shared 8 overs and bowled very well. And then they have their quicks. And of course, they will not sacrifice the quicks. Waqas Maqsood has been bowling very well. Hunain Shah will get his share. Ahmed Danial, you better not take any of his overs away. Amir Yamin, plenty of them. Down the wicket. What a shot. He's launched that in orbit. Maximum hits the grill in one of the stands. We've been waiting for this from a Clark. It is going to be a Clark's day. 2 overs gone, 13 for none. Lovely use of the feet. That power behind that shot. Look at that. That has traveled the distance. That is probably the huge hit that they have seen in this Multan leg. The biggest of it. We saw a couple of in Rawalpindi, but this one just beats them all. Clark is in this side for a reason. He's a wicket-keeper batter, and we know he can go big too. Very well done. Must be Saim Ayub. Young, athletic. Surely stops a boundary, because once that passes that circle, there's no point chasing it. You get value for shots on this outfield. Top work. You got to bring your A game today if you have to qualify for the finals. Danish is also there, but Saim Ayub, he's been phenomenal with the bat, with the feel. He can bowl a few overs also. Very good cricketer. Danish Aziz is also back, left arm spin. He can bat well down the order. This is an intense game. Pulls that one away. That's another maximum. I guess they've taken a leaf out of KP's attack. He probably played the role of Rihan Afridi here. Just get into the minds of the bowlers. It's too good of a pitch to be bowling that length. That is easy pickings.
Somebody of the Clark skill, he's not gonna miss out on that. You got to vary that length, you got to change it. You got to be clever enough to be surviving on a pitch like this. Otherwise, a Clark is gonna burst you out. Yeah, not bad. Marginal, but that's a legitimate delivery. On-field umpires for the second semi-final, Zamir Haider, currently at square leg, 86th T20 for him. And here he is, Imran Javed, in his 33rd T20 match. 16th T20 match, sorry. 33rd is Iqbal Sheikh, who's somewhere around in the ground. Iqbal Sheikh has had 33 games as match referee. Third umpire is Tariq Rashid. They've had a good outing. Some of the umpires have really controlled the game well. Decisions have been amazing. You're bound to have some flaws as well in real time. But all in all, you'd say that job well done. And always good to have a smile. In the air, but no problems whatsoever. One bounce. It's taking Sohail in a manner as if he is bowling medium pace. Again, not the right line, not the right length. Easy pickings on the up, over that cover fielder. They are looking dangerous. This CP side, this opening pair, they can damage the confidence of the Sindh bowlers very quickly. And we've already seen that. 25 runs just into the third over of the game. Remarkable. Excellent start. Yeah, that could go for 4 as well. Another one. This is getting to be a big over now. 12 already and 29 for no loss, Central Punjab. And we're ready now into the action. This is a good idea. Mir Hamza did get some swing early on the first over. It's been replaced. Maybe change of ends for him. Because this is a wonderful start by Central Punjab. They need an early wicket. They need it right now. 154 wickets for Anwar Ali. Not only the power hitting, but the running has been good. Whatever available, they just push it around with soft hands and quickly run. Looks like they come out with a game plan. Now look at that, the classical jab. Just waited enough, using the pace and placing it beautifully. That is Fizan for you. This placement was just amazing, right between the two fielders. They're on a roll. They mean business. They want to win this one. They want to play KP tomorrow. Get one. It's so tense out there. These two sides remind me of the rivalry of Karachi and Lahore. That was such a huge game whenever we used to see that in our teenage. Playing Karachi always was the game of the tournament, regardless
you qualify for the final or not. You have to beat Karachi. That was the intensity. Same is what I can feel here. Sindh versus Central Punjab. Just don't miss out on this game. This is an excellent game in our hands. Pulls that one, catch it as a call, but will land in the vacant zone. Clark and Faizan both are trying to attack every option that has been put in front of them by Saud Shakil. Didn't get hold of it. That was well-directed bouncer, right on his helmet. If you're looking to ball those short deliveries, this is the right way. This most likely he's gonna top edge it. He's off to a good start at the moment, both Faizan and Clark. 32 without loss. Anwar Ali, he's got a job to do. He needs a wicket here. Straight, flat, and 6. My word, Central Punjab has come out with a different mood today. Not learning at all, Sindh bowlers. Just bowling that nice, gentle length with this pace. They're always going to go after them. Look at that. That is easy pickings. This length will not work against these two big hitters. They are in excellent touch. They're going to hit you for 6s. They're going to just ruin your confidence. And that is what they are doing, these two batters. 38 already. We're not done with the 4th over. And again in the slot. 6 more, 6 number 4. That is brutal hitting. That is fantastic by Faizan. He knows that this is an important inning and he's delivering. Sad faces in the Sindh camp, and rightly so, because they are bowling at a poor line in length. This was a wonderful shot. This was a better in length, but he picked it up so nicely. And the power behind him taking it towards that mid-wicket boundary. That is an excellent start. Wow, we've got a game in our hands. Deep mid-wicket is being placed now. What are they sacrificing? 3rd man. Churchill goes in the deep. 44 for no loss. It's like an off-spinner's field. Square leg and mid-wicket deep. What is he going to do? Where is he going to bowl? That's the question. Last delivery. Oh, he's wrap shot that. 3rd man or no 3rd man, that's going over. 3rd 6 in the over. That's a massive over. 21, 50 up for Central Punjab. You got your field set for that onside and you bowl outside the off stump. That is asking for trouble from Anwar Ali. That is a wonderful way to finish this over. 3 6s for Faizan. It's 4 overs gone, 50 for non-Central Punjab. ये सनसनीखेज इब्तिदा है, सबसे तेज तरीन नेट सेंचुरी है टूर्नामेंट की। इससे पहले 28 गेंदों पर बनी थी, ये 4 ओवर्स में ही मुकम्मल हुई और अभी भी नॉट आउट हैं ये दोनों ओपनर्स। मीर हमजा आए हैं दूसरे एंड से, पवेलियन एंड से इनका इकलौता ओवर हुआ था जिसमें 11 रन्स बने थे। अखलाक ने छक्का लगाया, वहीं से दरअसल सेंट्रल पंजाब की परवाज शुरू हुई। फैजान इन्होंने तहलका मचा दिया पिछले ओवर में। अनवर अली को जिस तरीके से इन्होंने आड़े हाथों लिया, विकेट के अकब में भी उतने ही मजबूत नजर आए। ये अच्छा कैच भी देखने को मिला। बहुत ही जबरदस्त आगाज है, सनसनी फैला दी। लगता है सेंट्रल पंजाब ने अपनी बेहतरीन क्रिकेट बचा के रखी थी इस मैच के लिए।
ये गेंद लगी है पिछले पैड पर, क्या लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। यहाँ पर लेग बाई के 4 रन्स बन गए, जाहिद महमूद नहीं रोक सके। पर ज़मीर हैदर ने गौर ज़रूर किया, लेकिन आखिर में वो भी यही शायद समझें कि गेंद स्टंप्स के बाहर पिच हुई है। मीर हमजा देर तक अपील करते रहे, लेंथ तो काफी फुल थी, इसमें ज्यादा इम्कान यही होता है कि बॉल विकेटों के दरमियान पिच हुई, लेकिन अंपायर का फैसला बॉलर के खिलाफ आया। ज़मीर हैदर पर एक मरतबा फिर दबाव था, लेकिन लेग बाय के 4 रन आ गए इस गेंद पर। काफी आगे निकल गए, और यहाँ अगर ज्यादा फुर्तीला फील्डर होता शर्जील की जगह पर तो ये काम तमाम हो सकता था, क्योंकि अखलाक जो है रन लेने पर बिल्कुल आमादा नहीं थे। अब माजरत करने जा रहे हैं फैजान अखलाक की जानिब। ये बहुत ही ज्यादा आसान ले लिया इन्होंने शर्जील खान को, गेंद सीधा जा रहा था उनकी तरफ, और जाहिर है कि अखलाक के लिए मुश्किल हो जाती। शर्जील बॉल तक पहुंचने में स्लो हैं, लेकिन थ्रो उनकी काफी तेज रफ्तार होती है। विकेट चाहिए सिंध को, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है। ये दोनों बैट्समैन बिल्कुल ग्रेस करते नहीं है, जो ही गेंद इनके पाले में मिलेगी हवा में भी शॉट खेलने जाते हैं। यही इन दोनों का खासा है, ये ग्राउंड शॉट खेलना है इनकी कभी भी तरजीह होती नहीं अखलाक और फैजान की। जी बिल्कुल, और थोड़ा ये भी देखा गया है कि जब से लाइट्स ऑन हुई हैं बॉल थोड़ा बेहतर बल्ले पे स्लाइड होने लगा है। तो दोपहर की इनिंग्स थी, वहाँ ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं बॉल जो है वो बल्ले पे उस तरह आ नहीं रहा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की इनिंग्स का भी जो दूसरा हाफ था वहाँ भी बॉल ऐसा लगा स्लाइड हो रहा, और यहाँ तो ऑन दिया बड़े शॉट लगे हैं। अखलाक क्या फिर से मिड ऑन या मिड विकेट के इलाके में जाना चाहेंगे? बॉलर के सर के ऊपर से इस सीधा शॉट नहीं हो सकता। सनसनीखेज बैटिंग अखलाक की, नई गेंद पर चार्ज कर रहे हैं वो मीर हमजा को। बुझा बुझा टूर्नामेंट रहा है अखलाक का, लेकिन आज बड़ी स्टेज पे बहुत ही जबरदस्त आगाज किया है। कदमों का इस्तेमाल किया, स्लो डिलीवरी भांप ली थी पहले ही, पिच पर पहुंचकर सीधा बॉलर के सर के ऊपर से महफूज तरीन स्ट्रोक। आप कह रहे थे कि सेंट्रल पंजाब ने अपना जो बेहतरीन है वो बचाया है टूर्नामेंट के बैक एंड के लिए, यही बात हम अखलाक के बारे में भी कह सकते हैं। इससे पहले ये बिल्कुल बुझे बुझे थे, रन्स नहीं आ रहे थे, टाइम नहीं कर सके, रूम क्रिएट किया था, ज्यादा जोर से हिट करने चले गए। इस बार एक और महंगा ओवर, 12 रन दिए मीर हमजा ने, 5 के बाद सीपी 62। बहुत ही जबरदस्त पावर प्ले रहा है अभी तक, और एक ओवर अभी भी बाकी बचा है। फैजान का टूर्नामेंट जब से बेहतर होना शुरू हुआ तब से सेंट्रल पंजाब की परफॉर्मेंस का ग्राफ भी ऊपर उठता चला गया, और आज भी 18 गेंदों पर 35 रन, तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट है इनका। दानिश अजीज लगता है बॉलिंग के लिए आ गए हैं, वकार यूनुस इनक्लोजर एंड की जानिब से। या ये एक दाव खेला है सऊद शकील ने, और आज कमी महसूस हो रही है। पहले ही सिंध की टीम को अबरार अहमद की, जो कि पावर प्ले में 2-2 ओवर्स भी करते रहे, विकेटें भी लेते रहे। दानिश अजीज को ये बड़ा सख्त चैलेंज दरपेश है, क्योंकि दोनों बैट्समैन बड़ी बेदर्दी के साथ खेल रहे हैं। लॉन्ग ऑफ है, डीप मिड विकेट है,
और खेल दिया इसे गांव गोशे की जानिब। फील्डर रोकने में नाकाम रहे। इस बार भी खासा वक्त मिल गया क्रीज में डीप जाकर गेंद पर पिल पड़ने का फैजान को। मिडॉन का फील्डर ऊपर ले रखा था दानिश ने अगेंस्ट द स्पिन। वो खिलाना चाह रहे थे फैजान को, लेकिन इस लेंथ पे तो कोई मसला नहीं हुआ। ये गेंद पहले पैड पर लगी है। अंपायर को कायल करना चाहा सरफराज और दानिश, दोनों ने। हैरान है सरफराज ये कैसे बच निकले। दो आवाजें आई थी। आर्म के साथ बॉल किया, पुश किया दानिश ने एंगल के साथ। क्या पहले पैड को लगी थी? खुशकिस्मती फैजान की। इमरान जावेद ने फैसला दिया बैट्समैन के हक में। और उठाकर खेला ये 4। और फैजान जब गेंद को हिट आउट करने में कामयाब हुए हैं, सिर्फ एक ही बात तय होना बाकी रह जाती है कि ये 6 होंगे या 4। स्लॉग स्वीप, घुटना टेक कर उन्होंने फिर गैप हासिल किया और इस मरतबा बॉल मैदान के अंदर ही गिरी। 1 बाउंस 4। यहाँ पर अखलाक ख्वाहिशमंद हैं दूसरा रन लेने के, लेकिन इसका मौका नहीं दिया। अच्छी फील्डिंग की उमर बिन यूसुफ ने। इनके आने से फील्ड में एक जान पड़ जाती है सिंध की। शॉट चेक किया, मना किया अखलाक को। इस गेंदों पे नेट सेंचुरी फैजान ने बनाई इस टूर्नामेंट में पहले ही। आज भी सनसनीखेज बैटिंग की उन्होंने अभी तक। फिर गेंद हवा में है और ये मजीद आगे गई। अनवर अली को कुछ देर के लिए लगा था कि शायद ये उनके हाथ लग जाएगी, लेकिन मोहम्मद अखलाक इन्होंने आज तहलका मचाया हुआ है। इस ओवर की इब्तिदा चौके से हुई और अंजाम छक्के पर 77 किसी विकेट के नुकसान के बगैर। पावर प्ले का इख्तिताम हुआ और तहस नहस कर दिया सेंट्रल पंजाब ने सिंध की बॉलिंग लाइनअप को। इस मुकाबले में किस्मत ने जरूर सेंट्रल पंजाब का साथ दिया। यहाँ ये कहना होगा 2 मौके पर ऐसे फैसले हुए जो सिंध के हक में जा सकते थे, लेकिन अखलाक और फैजान की धुआंधार बैटिंग ने यहाँ पे हलचल मचा दी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। 77 रन, ये भी एक रिकॉर्ड है पावर प्ले का। इससे पहले सदरन ने 68 रन बनाए थे 6 ओवर्स के खेल में। जाहिद महमूद, ये सिंध के पास मौका होगा यहाँ पर विकेट लेने का, क्योंकि जाहिद महमूद जो हैं ये हमेशा कोशिश करते हैं कि रन्स रोकने के बजाय विकेट लेने की कोशिश की जाए। गेंद को हवा देते हैं। आखिरी छक्का मिड ऑफ ऊपर था, ज्यादा जोर से हिट लगाने की कोशिश नहीं की, टाइम किया और टाइमिंग लाजवाब। बहुत ही आला शॉट था ये। यहाँ पर आउट हो जाएंगे। जी हाँ, ये साफ साफ स्टंप्स के सामने थे। जाहिद महमूद को लाने का हरबा कारगर रहा। ये विकेट टेकर हैं लेग स्पिनर, और एक बार फिर कामयाबी ने उनके कदम चूमे। अच्छी बॉलिंग थी यहाँ पर, बॉल को स्लो किया, ट्रैजेक्टरी ज्यादा ऊंची नहीं थी और ये रिवर्स स्वीप बिल्कुल विकेटों के सामने। इस मर्तबा जमीर हैदर ने बॉलर्स का साथ दिया और जाहिद महमूद ने सिंध को वो ब्रेक थ्रू दिलाया जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी। अच्छे नजर आया आज अखलाक, 28 रन बनाए, पंजाब 78 पर 1।
सरफराज बात करते रहे इस ब्रेक में सिंध के खिलाड़ियों से, सांस लेने का मौका मिलेगा। तैयब ताहिर भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन जरूर इस विकेट पे इनिंग्स का आगाज करना आसान नहीं है, इसलिए सिंध के पास मौका है कि कम बैक करें। 140 का बहुत मुतासिर कुन स्ट्राइक रेट है उनका। अच्छा स्क्वायर ड्राइव किया, ज्यादातर स्क्वायर कट करते हैं लेकिन इस बार गेंद जमीन से लगी गई, ऑफ द मार्क हो गए। और जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे, रिवर्स स्वीप करने के लिए गए, सर हिल गया था अखलाक का। बाहर बैकअप कर रहे थे लेकिन इतना नहीं फैजान कि उनको खतरा होता। अब तक 7 छक्के लगे और 5 चौके हैं इस इनिंग्स में, और यही T20 क्रिकेट का ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी है। आज उसी की पैरवी की है सेंट्रल पंजाब के टॉप ऑर्डर ने। लेकिन ये अच्छा ओवर खामोश रखा हुआ है, इसमें चौके छक्के का कोई नामो निशान नहीं। विकेट भी ले चुके हैं जाहिद महमूद। यही लेग स्पिनर की मौजूदगी जो है वो हमेशा फाल रहती है, किसी भी टीम का ये असासा होते हैं। जाहिद महमूद यहाँ पर शाबाश के हकदार हैं। अच्छा ओवर रहा उनका, 81 पर 1। पावर प्ले सेंट्रल पंजाब के नाम रहा। अखलाक और फैजान की बैटिंग, बहुत ही बड़े बड़े छक्के देखने को मिले। मीर हमजा और सोहेल खान जो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, आज उन पे धावा बोल दिया फैजान और अखलाक ने। एक के बाद एक छक्के और चौके लगते रहे। सोहेल खान अनवर अली के इस ओवर में 3 छक्के लगे। ऑप्शंस देखें कि किस तरह उन्होंने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड अटेम्प्ट किया बड़ी शॉट के लिए। सनसनीखेज बैटिंग। दोनों ही एंड्स पर अब बॉलिंग में रद्दबदल होगा। आसिफ महमूद बॉलिंग करेंगे, ये भी टूर्नामेंट की दरियाफ्त कहे जा सकते हैं सिंध के लिए। अच्छे ऑलराउंडर हैं, कंट्रोल से गेंद करते हैं, अच्छा बाउंसर है, वेरिएशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छी डिलीवरी ऑफ द सीम, कट हुई, रूम के लिए बिल्कुल क्रैम्प करके रख दिया उन्होंने तैयब ताहिर को। अभी भी सीम मूवमेंट थी, ये बॉल भी सीम पर लगकर अंदर आया। और जिस तरह मैच से पहले जब हम खड़े थे अब्दुल रज़ाक के साथ बात कर रहे थे सेंट्रल पंजाब के कोच, ये देखिए इस टूर्नामेंट में पावर प्ले का रिकॉर्ड हासिल किया सेंट्रल पंजाब ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में। पहले सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न के खिलाफ 68 रन बनाए थे, सिंध ने भी 67 और 60 की बारियां खेली हैं पावर प्ले में। यार ये 3 बार हम सिंध का नाम देख रहे हैं, तो उनमें जवाब देने की बिल्कुल अहलियत है। इसलिए मैच अभी खत्म नहीं हुआ और सिंध की टीम में इनको हमने फाइट बैक करते हुए देखा है। इस चैंपियनशिप में आसिफ महमूद ने इनके हारा हुआ मैच अपनी बैटिंग के जरिए जितवा दिया था। यहाँ अगर 1-2 विकेटें गिर जाती हैं तो, क्योंकि शब का मैच है, इतना आसान नहीं होता मिडिल ऑर्डर के लिए पहुंचते ही खेलना। 21 गेंदों में रिकॉर्ड बनाया टूर्नामेंट का, हुरैरा का रिकॉर्ड तोड़ा 3 गेंदों के फर्क से फैजान ने। और ये अच्छा शॉट खेला, इस बार बर वक्त कनेक्ट किया और गेंद चली लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल सांस लेने का मौका नहीं दे रहे फैजान सिंध के बॉलर्स को, फील्ड को मनूवर कर रहे हैं। इस मरतबा ज्यादा बुरा बॉल नहीं था, पांड्या का फील्डर अपना आगे रखा हुआ है। आसिफ ने ये देखिए ऑफ स्टंप की बॉल को बिहाइंड स्क्वायर खेल दिया 4 रन के लिए। 50 पर जा पहुंचे और इस टूर्नामेंट में तेज तरीन 19 सेंचुरियां बनाने वाली फहरिस्त में 2 दफा फैजान का नाम आ चुका है और तीसरी दफा भी आने वाला है अगर वो 1 रन बना लें तो। एक बार फिर गेंद को कट करने में कामयाब हुए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आसिफ महमूद, फैजान। ये
जो सेंट्रल पंजाब की काया पलट थी पहले 4 मैचेस हारने के बाद, वो फैजान की बैटिंग की बदौलत ही हुई। जिस तरीके से नई गेंद पर जाकर ये हमला बोलते रहे सेंट्रल पंजाब का तैयब ताहिर के अलावा उस वक्त तक कोई भी बैट्समैन रन्स नहीं बना रहा था। बाद में शुएब मलिक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। कासिम अकरम अब फॉर्म में आ चुके हैं और एक झलकार आज देखने को मिली टॉप ऑर्डर की जानिब से। और ये सुहेल खान को कोशिश करनी चाहिए थी इस मौके पर कैच करने की। तो 26 गेंदों में निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली इस अहम मैच में, नॉकआउट मैच में। ये बड़ा कारनामा है नौजवान फैजान का। उनने बड़ी ही दिलकश बैटिंग की, 6 चौके लगाए और 3 फलक शिकाफ छक्के भी। शानदार बैटिंग, बड़े स्टेज पे उन्होंने परफॉर्म किया और कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहे हैं जब से उन्होंने पहला 50 किया था रावलपिंडी में। इस टूर्नामेंट में तीसरी निस्फ सेंचुरी उनकी। फैसलाबाद से ताल्लुक है फैजान का। ये PSL का फाइनल भी खेले थे, PSL 5 का कराची में, जिसमें कराची किंग्स की टीम चैंपियन बनी थी। यहां पर तैयब ताहिर इस आखिरी गेंद पर 1 रन ले गए और स्ट्राइक भी अगले ओवर के लिए 88 पर 1। Expensive bowling card from Sindh. One success, that 2 from Zaid Mahmood. Gone, Tayyab Tahir, that's a massive wicket there. That probably is that comeback for Sindh that they were looking for. They were very explosive, Central Punjab, but Zaid Mahmood, this time it was a half-tracker, really couldn't get that balance going. And straight to the fielder, good take in the deep. Another wicket for Zaid, and this one is all important. Tayyab Tahir going back, Central Punjab 88 for 2. Qasim Akram, the captain, walks in. He's carrying a sublime form. 2 brilliant innings in previous 2 games. Explosive. Look at that strike rate. 142, that's what I'm talking about. They need to carry on that momentum. You look at the offside field, they've got to guard that point, backward point area, because that is where he's massively strong. He'll cut something from in front of the stumps and the ball spinning away. He'd like that. Sharjeel is there. Oh! He gets a bit of glove, I think. There'll be runs. He'll off the mark. He's coming back. 2 added to the total. No signal from the umpire, so Qasim Akram is off. 250s in the last 2 innings for him. He always comes up with this approach, but that's the wicket. No, that's not. Fling across, trying to unsettle Zaid Mahmood. Tayyab Tahir's wicket is a huge wicket. You'd like to look at the score, say, no, they're looking good, but Tayyab Tahir can add a punch. So Central Punjab will have to now today see can they do it without him.
Good work from Zahid Mahmood, 6 for 2 in his 1.4 overs. In fact, 7 runs. I was there to be hit. Just couldn't really maintain his balance. Tayyib Tahir, he did found the middle of the bat. It's a few meters short. Oh, yes, well done, Sharjeel Khan. That's what the team needs, the commitment. Really good effort. That's what you want from your all fielders. Doesn't matter wherever they are. Keep things tight and neat. That's the shot I'm talking about. Guard that area. He's so good, Qasim Akram. He doesn't spare you in that region. 9 gone, 96 for 2. It's not his conventional cut. He gets very low, collapses his back leg, and that's why he can create that extra bit of an inch where he can exploit that. Timing and placement was spot on for the boundary. Now be wide, so still 9 overs, 97 for 2 now. National T20, Kingdom Valley, the proud sponsors. National T20 motorbikes, lucky draw. Powered by Kingdom Valley. All the ticket holders get a chance to win. So get your tickets now and come and watch the semi-final and the final tomorrow. Lovely looking bikes, these, powered by Kingdom Valley. The next time we are here for the England-Pakistan Test match, you can ride these and come and watch the match. No is the call. Could have been a run. I think the idea from the striker was right. He was hoping they'll go to a little right or left of Sharjeel. We went straight to him. But still, I think Sharjeel was at the end of the circle. Wasn't traveling too quickly. Could have been a run. Wasn't straight away, turned it down. Almost halfway through. You need to pick your fielders, whether it's for your boundary options or tight singles. Short ball in the air will land safe. Mena sticking to the rope in the deep. Will take a lot of running to come in. He's not happy. Just got a bit, I won't say tall on him, but he wasn't in a good position. Just cramped for room. And you need a touch more to pull that shot. Qasim Akram, they've pushed third man wider. That's one of his strengths. You need to stay away from that area as a bowler. A lot of running for a sweeper cover. Will he cut it off? No. Zahid Mahmood can't get there. That zone from in front of the square to behind the square belongs to Qasim Akram. You've got to have an extra man there. Good awareness from Qasim Akram. But the delivery, yes, he never went to play it behind square or towards where the fielder was. Right in front of square where that vacant gap. The idea was right, but the length should have been a touch shorter to bring those patrollers from the boundaries into the play. Driven. Should be 4. Runs are leaking once again. The fastest 100 by any team in the National T20 in 9.4 overs. And add 4 more to it. Take it to 106 for 2. More troubles for Sindh.
They're struggling, really struggling. And Qasim Akram, he's cashing his form. Have a look at that. Just the timing, just the jab. And all he needed was get the placement right. Standing tall, good high elbows. They're enjoying their timeout, but men in orange aren't. Too short, but there's protection. 10 overs gone, 107 for 2, Central Punjab. Any team will take this, especially in a semi-final. Mohammad Akhlaq, Mohammad Fazan still out there in the middle on 52, Akhlaq on 28. Tayyib Tahir couldn't really capitalize. Qasim Akram, the captain, on 16. Just of 7 deliveries. They're scoring runs 10.7 per over. They need to capitalize on this foundation. They cannot lag back. Is that a catch? Is that a catch? Oh, yes, he's given it now. Zamir Haider took a little while. We heard a faint nick on the second attempt. Sarfaraz catches it. Zayed Mahmood strikes again. He's got 3. He's the lone fighter at the moment from Sindh. That's a big wicket for Sindh. Fazan gone now. Beautifully bowled, just tossing it outside. Going for a slog sweep, never in that line. Just a fumble and no worries there. For a moment they thought the umpire is not interested. Big wicket to lose for Central Punjab. 52 for Fazan, 108 for 3. Shoaib Malik and Qasim Akram had a brilliant partnership, made sure team stays alive, and Malik walks out. He's had a good outing last time around. He shared the player of the match. 62 not out in the previous outing. He's come out with the team not in any sort of pressure. Yes, the wickets are going down, but the run rate is 10.45. 95 not out his best. His work is cut out. Last time around he said that I wanted to spend more time out there and then flourish. So let's see what his plans are this time around. Good batting pitch. Been exceptional. Zayed, he's mixing it up nicely. Slide of an air, came back in. Slightest of the edges. Run out chance, non-strikers. No, Shoaib Malik makes it. He's a vital part of this CP's batting line. Off the mark, Malik and Sindh are aware that he's a force to be reckoned with. He's very good in these middle overs. That's the take. Have a look at that. Oh, I don't think he ever gathered it in the gloves. Good pair of legs there. Grabbed them between the thighs and gone. Now a bit of a
strategy moment for Saud Shakil. Third over for Zayed Mahmood. He's got one more after this. What does he do then now? Try Saim Ayub. Spin is working. Fast bowlers are being hit all over. Doesn't have a choice. He's gone with 4 pacers today. There's no Abrar Ahmed available to them. 11 gone. 111 for 3. Good to see those happy faces, enjoying second semi-final here at Multan Stadium. They've come in numbers and it's increasing. We've got Ghulam Hussain Shahid, Chairman, Kingdom Valley, proud sponsors of National T20 Cup. Aspiring cricketers, these young kids watching live action in front of their eyes, their favorite stars. First over went for 21. Well, he can bowl 3 good overs and make those numbers look good. Things can change, don't be surprised. Well, it's just that, what is the final score? That's what matters. Pakistan versus England, 7 T20s, starting a day after the final, which is from the 20th. Both Shoaib Malik and Qasim Akram are very strong in that region. Talking about Pakistan-England series, first day's ticket collection will go towards flood affectees, and you can go ahead and buy a ticket today. Where do you want to go? pcb.bookme.pk. And that is where you go and buy the ticket. Especially the first day's ticket collection is going in an aid, a contribution towards flood victims. So big cause. Plus don't miss the match. 7 of them, 4 in Karachi, 3 in Lahore. Lots of cricket in Pakistan. Don't forget the PJL, the Pakistan Junior League, starts from the 6th. England comes back for Test, the New Zealand comes. Marina is going to be very, very busy. So are you, Sikandar. It's great to see cricket coming back to Pakistan. Good teams traveling here. Going to see exciting cricket. PJL also a great platform for the youngsters. Now it's at edge, 4. It was a good ball. He's unlucky, he's hit the back of the bat. That's how it seemed. Whatever happened is 4 more to Central Punjab. Talk about luck. It's Shoaib Malik who's carrying it. Careful the cross, and all he wanted was get some wood on it. Anwar Ali cannot believe his eyes. Would have been a very plumb decision if the bat was missing. 4 runs, he'll keep you busy. Just get a feeling he was on the move while he was trying to play that. Face was surely closed a little earlier than it should have. Makes room, smashes that. Oh, they're coming back for 2. That shouldn't have been second. He should have thrown the ball, didn't release the ball as quickly as he should have. Anwar Ali has all the reasons to be angry.
Zahid Mahmood was patrolling that deep cover boundary. Yes, it did went quickly, but you have to release it even quicker when Shoaib Malik is in the middle. He took all his time to get down to the barrier and then a casual throw. He's been brilliant in his bowling, but he has to prove himself as a fielder. Be nice to him. He's got you 3 wickets. Just please throw the ball quickly. Oh, try to be cheeky to work it down to third man. 12 gone. 119 for 3. ये शोएब मलिक और कासिम अकरम के दरमियान जो प्रीवियस पार्टनरशिप थी, जिसके सबब नॉर्दर्न को सेंट्रल पंजाब ने जेर किया था और उनने आगे पेशकदमी की सेमीफाइनल की जानिब। दोनों खिलाड़ी जो हैं उस दिन मैन ऑफ द मैच के हकदार थे। दरअसल शोएब मलिक ने खुद हकदार ठहरा दिया था कासिम अकरम को और अपना जो अवार्ड था वो अपने कप्तान को दे दिया, कम उम्र कप्तान को। और शोएब मलिक के साथ खेलते हुए कासिम अकरम और ज़्यादा अच्छे लगे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। ये मलिक की मौजूदगी का असर है कि ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। आज भी तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। या ऐसे लगता है दोनों बहुत ही आइडेंटिकल हैं, एक ही तरह के प्लेयर हैं। ऑफ स्पिनर बैटर्स हैं, दोनों मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और आई एम श्योर इस टूर्नामेंट से कासिम अकरम की ओवरऑल गेम में बहुत निखार आएगा। यहाँ बार बार क्रीज से बाहर निकल आते हैं ताकि जो स्पिनर है वो एक जगह पर गेंद को गिरा ना सके। शोएब मलिक की यही खूबी रही है जो दूसरों से उनको मुमताज़ करती है स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। और ये बुरी गेंद थी लेकिन उस पर विकेट मिल गई। T20 क्रिकेट में अच्छी गेंदों पर चौके और छक्के लग जाते हैं और यही क्रिकेट का खेल है। कई बार आपको खराब गेंद पर कामयाबी मिल जाती है। जी हाँ, बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे शोएब मलिक क्योंकि बॉल मिल गया था, शॉर्ट डिलीवरी थी लेकिन सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और फ्लैट बॉल गया फील्डर के हाथ में। जी हाँ, डिसअपॉइंटेड डेफिनेटली होंगे क्योंकि बॉल मिल गया था। यही शायद ये सोच रहे होंगे इसे अगर थोड़ा फील्डर के दाएं या बाएं खेलते तो रन्स मिल जाते। एक बहुत अहम टाइम पे बहुत अहम विकेट हासिल किए दानिश अजीज ने। शोएब मलिक बना सके 9 रन 120 पर 4 सेंट्रल पंजाब। इरफान नियाजी की आमद हुई है इस वक्त, जो कासिम अकरम की कप्तानी में हालिया अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पाँव रखने की जगह सिंध ने बना ली है इस मैच में। 78 पर पहली विकेट गिरी थी और उसके बाद से कोई पार्टनरशिप पनपने नहीं दी सिंध के बॉलर्स ने। उनके दोनों स्पिनर्स ने ही यहाँ पर 4 विकेटें हासिल की हैं। जहाँ एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे शायद 200 से ऊपर रन हो जाएंगे लेकिन अच्छे तरीके से वापस खींचा है मैच को सिंध के बॉलर्स ने। 57 रन बेस्ट है, स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रेसिव है 150 की और ऐसी इनिंग एक दरकार है। यहाँ पे नीचा रहा है इस बार बॉल, तो दाद देनी होगी दोनों स्पिनर्स को, जाहिद महमूद को स्पेशली जिन्होंने 3 विकेट्स लेके वापसी की है सिंध की। और आखिरी ये जिस तरीके से शोएब मलिक आउट हुए, बॉल मिल गया था, लेंथ अच्छी थी बट शायद एग्जीक्यूट सही नहीं हुआ, प्लेसमेंट सही नहीं थी और उस तरीके से हवा में खेले भी नहीं, जितनी पावर होनी चाहिए थी उस तरीके से पावर हासिल भी नहीं कर सके। अब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होगा कि इरफान नियाजी जो कि हिटर हैं और किंग हिटर हैं ये इस सेंट्रल पंजाब की टीम के, लेकिन ये आमतौर पर आखिरी 4 ओवर्स ही खेलने वाले खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल इतना बड़ा मैच है, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, क्या
ये 7 ओवर्स से ज़्यादा बैटिंग कर सकते हैं, विकेट पर ठहर सकते हैं। 121 पर 4। ये अच्छा खासा यहाँ पर मजमा लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाले तमाशाई मौजूद हैं तमाम स्टैंड से, जहाँ जहाँ इस वक्त रौनक है। बड़ी जोर की आवाज़ें उठ रही हैं। इन क्रिकेटर्स को यहाँ हम कह सकते हैं दिल से उनका खैर मकदम किया है। मुल्तान वालों ने हमेशा की तरह वो बड़ा दिल दिखाया है। जी, और आगे से क्रिकेटर्स ने भी उनको एंटरटेन किया है। जिस तरीके की क्रिकेट हमें देखने को मिली है, तमाशाइयों ने तो डेफिनेटली एंजॉय किया है। हमने कमेंट्री बॉक्स में बहुत एंजॉय किया है। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ है और एंजॉय किया है डेफिनेटली। क्राउड ने भी दाद देनी होगी इन क्रिकेटर्स को। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है और इसकी खूबसूरती जो है दोबाला हो जाती है जब यहाँ रात का वक्त हो, फ्लड लाइट्स जोबन पर हूँ और तमाशाइयों का शोर भी सुनाई दे। जी हाँ, नो डाउट। और अगर मैच की बात करें अब, तो आप आगे बात कर रहे थे इरफान न्याजी की, वो कैसा खेलते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कासिम अकरम इस टीम को कैसे आगे लेके जाते हैं आखिरी 7 ओवर, क्योंकि अब शोएब मलिक की सहूलत मौजूद नहीं है दूसरे एंड पे। अब अहम होगा कि कासिम अकरम ज़रा मेच्योरिटी दिखाएं और एंड तक जाएं, क्योंकि ये खड़े रहेंगे तो रन आते रहेंगे। अगर यहाँ पे इनकी विकेट गिर जाती है तो मुश्किलात सेंट्रल पंजाब के लिए बढ़ जाएंगे। तो इरफान न्याजी बड़े हिटर हैं, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम कासिम अकरम की इनिंग है। यहाँ कासिम अकरम को अब जाहिर है किसी हद तक अपने खेलने का अंदाज भी बदलना होगा। ये दिलकश मंजर है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का और ये आप देख सकते हैं इसके अतराफ में अब अच्छी खासी आबादी हो गई है। एक ज़माने में ये बिल्कुल वीराने में था, विहाड़ी रोड पर, और इसके इर्द गिर्द लहलहाती हुई कुछ फसलें हुआ करती थी, लेकिन अब आबादी है। मंजरनामा तब्दील हुआ है इस मुल्तान स्टेडियम का और किसी हद तक सऊद शकील के लिए भी इस सेमीफाइनल का 4 विकेटें गिरने के बाद किसी हद तक ये सुख का सांस आप ले सकते हैं। लेकिन ये गेंद फिर से करना होगी अनवर अली को। आज क्रिकेटिंग डिसिप्लिन इतना अच्छा रहा नहीं। अनवर अली सीनियर बॉलर हैं और इनसे तवक्को की जाती है कि सेमीफाइनल में ये हाथ खड़ा करेंगे, दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। जी हाँ, पहला ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ है, लेकिन जितने कैरेक्टर वाले, जितने अच्छे ऑलराउंडर हैं, आई एम श्योर कि कम बैक करेंगे। और ऐसा ही बड़ी टीमें करती हैं तारिक भाई। अगर सिंध जैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किए, घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं। रन्स होते हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन अच्छी टीमें, चैंपियन टीमें वही होती हैं जो परेशान नहीं होती हैं, अपना कूल रखती हैं और अहम मौक़ों पे परफॉर्म करती हैं। लेग साइड में फाइन लेग को आगे लाया गया, स्क्वायर लेग पीछे है और डीप मिड विकेट भी। यहाँ पर रन्स मौजूद हैं। न्याजी जाना चाहते हैं, खासे हमने बेकली दिखाई वापस स्ट्राइक पाने की, लेकिन इसका मौका दिया नहीं, क्योंकि विकेटें गिरने के बाद एक हरारत सी, एक शरारा सा वो नज़र आने लगा है आउटफील्डर्स में भी। जी, डेफिनेटली एक मोटिवेशन आ जाती है विकेट हासिल करने में कि आप गेम में मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है उसके बाद तो बहुत मुश्किल होता है टीम्स के लिए वापस करना, क्योंकि मोहम्मद इखलाक ने 28 रन बनाए, सिर्फ 15 बॉलों में 4 छक्के उसके अंदर मौजूद थे, 3 छक्के फैजान ने लगाए। और जिस तरीके से वो पार्टनरशिप रही, बहुत मुश्किल होता है वापस आना मैच में। लेकिन जाहिद महमूद ने शानदार बॉलिंग की है। अच्छा पुल शॉट, पहुंच जाएंगे जाहिद, सिर्फ 1 रन तक उनने महदूद कर दिया। कमाल की फील्डिंग, कमाल का फाइट बैक यहाँ सिंध की जानिब से। इनटू द पिच आप बॉलिंग करना चाह रहे हैं अनवर अली। मैदान में अच्छा माहौल है, कमेंट्री बॉक्स में भी अच्छा माहौल है यहाँ अली की मौजूदगी में। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आपके साथ बैठे हो। बहुत कुछ नए नए मुहावरे, नई नई बातें, हमेशा ही इंजॉय करते हैं आपके साथ कमेंट्री करना। घर वाली बात है। बिल्कुल, आपके साथ तो जितना वक्त मुझे हो गया है, अब घर वाली बात ही लगती है।
स्लो बॉल बाउंसर कासिम अकरम बड़ी तेजी से आगे बढ़े रन लेने के लिए। गेंद जो है कभी दाएं जा रही कभी बाएं जा रही है। प्रेशर है, ये बड़े मैच का प्रेशर है और हम ये देख रहे हैं कि बड़ी टीम सिंध जैसी टीम भी अंडर प्रेशर आ जाती है। ये होता है रन्स का प्रेशर। जब आप शुरू में इस तरह की बैटिंग करते हैं जैसे इन दो ओपनर्स ने की सेंट्रल पंजाब की जानिब से, तो मैं बहुत अभी भी क्रेडिट दूंगा सिंध की साइड को कि जिस तरीके से कम बैक कर रहे हैं। अभी भी आउटफील्डिंग बहुत शानदार हो रही है, घबराए नहीं है। ये खुश होंगे, रजाक भाई खुश होंगे जिस तरीके से वो रिलैक्स बैठे हुए हैं क्योंकि अच्छा आगाज दिया है। बहुत ज्यादा इस वक्त अनवर अली तेज बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइन से हट रहे हैं। शायद इस वक्त उनको कह दिया गया कि आप विकेट लेने की कोशिश करें। कासिम अकरम की इस मौके पर जो विकेट है वो बहुत बड़ा लम्हा साबित हो सकता है। काफी कमिटेड लग रहे हैं और बहुत, जैसे हमने आगे कहा कि निखार आ गया है कासिम अकरम में। इससे पहले जरा थोड़े दबे दबे रहते थे, लेकिन अब जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं उस बैटिंग का कॉन्फिडेंस जो है वो उनकी कैप्टनसी में भी लग रहा है। मैचेस भी जीत रहे हैं तो हर चीज इनकी फेवर में जा रही है और जिस पोजीशन में थे वहां से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा शॉट खेला वहां पर आसिफ महमूद ने इस बार फंबलिंग की और जहां एक होना चाहिए था वहां पर कासिम अकरम ने 2 बना लिए। 14 के बाद 130 पर जा। नौ 9.4 ओवर्स में एक वक्त था जब सेंट्रल पंजाब की टीम ट्रिपल फिगर में दाखिल हो गई थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस औसत से भी 186 तक ये जा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा विकटें नहीं हैं। और इसके बाद जिन खिलाड़ियों को खेलने के लिए आना है, आमिर यामीन से हम कुछ तवक्को कर सकते हैं, सामा मीर भी साथ दे सकते हैं अगर कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन हुआ उस वक्त तक। या इसीलिए मैंने कहा कि कासिम अकरम की इनिंग यहाँ से बहुत ज़रूरी है और 186 तक तो पहुँचना ही होगा क्योंकि सिंध चेजिंग में बहुत शानदार हैं। और हमने देखा है कि जिस तरीके से वो पसंद करते हैं टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना, टारगेट सामने होता है, चेज करना उनको पसंद है और जिस तरह के बैटर्स उनके पास मौजूद हैं, शर्जील खान का अगर दिन हुआ तो कोई भी स्कोर इनफ नहीं होगा और साइम अयूब का भी। इसीलिए अभी तमानियत है, ये नए हेड कोच हैं गुलाम अली उनके साथ मौजूद हैं, मजहर साहब जो मैनेजर हैं टीम के। यहाँ पर एक रन बना, गैर यकीनी से दौड़े थे दोनों, हालांकि दूसरा रन मुमकिन हो सकता था। ये नई टीम बनी है सिंध की और यहाँ सेमीफाइनल में पहुंची है, इसमें नया खून शामिल किया गया और इनने अपनी क्रिकेट जो है बड़ी दिलजमी के साथ खेली है। कुछ सीनियर क्रिकेटर्स भी थे, सरफराज अहमद, सुहेल खान, मीर हमजा। अच्छा तवाजुन है इस टीम में। सऊद शकील नए कप्तान थे और उनने भी अपनी जिम्मेदारियां खुश उसलूबी के साथ निभाई हैं। ये बेहतरीन बॉल था। ये न्यू लुक सिंध साइड है और उनके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो एनर्जेटिक एक टीम सामने आई है और मुझे थोड़ी हैरानगी हुई कि फराज खान और साद खान दोनों को नहीं खिलाया गया। बहुत ही टैलेंटेड यंग बैटर्स हैं। उमैर बिन यूसुफ को टीम में वापस लेके आए और सोहेल खान का भी रोल जैसे सोहेल तनवीर का है, शोएब मलिक का है, एक मेंटोरशिप के रोल में आ गए हैं ये भी और अच्छे तरीके से निभाया है। और एक चीज़ जो हम कहना चाहते वो प्रोजेक्टेड स्कोर है। कुछ ओवर पहले ये 220 से ज़्यादा था और अब जो है वो 182 पे आ गया है। इसका मतलब है कि अच्छा कमबैक किया सिंध ने। एक और अच्छा यॉर्कर। और अभी हम खिलाड़ियों के ज़्यादा करीब से देख रहे थे सिंध के
जो मैदान में इस वक्त मौजूद हैं और अभी तक उनके कंधे गिरे नहीं हैं। किंगडम वैली नेशनल T20 कप का दूसरा सेमीफाइनल। आज पहला सेमीफाइनल जीतने का एजाज हासिल किया दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा ने। और ये कशिश है इस T20 क्रिकेट की जो ले आई है मुल्तानिकर्स को स्टेडियम में। बोल्ड हो गए, इन स्विंगिंग यॉर्कर, रिवर्स स्विंग के भी आसार नजर आए और दरम बरम कर दिया स्टंप्स को कासिम अकरम की सोहेल खान ने। ये बहुत ही खराब शॉट है, शॉट सिलेक्शन यहाँ पे कसूरवार हो गई। देखिए डूम दिया अपने आप को, थोड़ा लेंथ बॉल था लेकिन थोड़ा स्विंग जरूर हुआ अंदर की तरफ आया। लेकिन क्या कहेंगे इस शॉट सिलेक्शन को, ये तो आपने तोहफा दिया है सोहेल खान को, क्योंकि इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे कासिम अकरम, कप्तान के एक अहम इनिंग खेल रहे थे, बहुत ही खराब शॉट मार के आउट हुए। 25 रन बनाए उन्होंने, 133 पर 5 सेंट्रल पंजाब। अब जिम्मेदारी आन पड़ी है एक लोकल बॉय पे, आमिर यामीन, जिनका ताल्लुक इसी रीजन से है। 32 साल इनकी उम्र है, काफ़ी तजुर्बा है, 111वां मैच खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट शानदार है। अब यहाँ से रीबिल्ड करना होगा, आखिरी 5 ओवर्स अच्छे फिनिश करने होंगे सेंट्रल पंजाब को। बड़े अनलकी होंगे अगर यहाँ से 180 तक नहीं पहुँचते हैं तो। उम्दा बॉलिंग सोहेल खान ने बड़ी तनदेही के साथ ये ओवर किया और ये देखिए बहुत ही पीछे हट गए थे, अपनी तीनों स्टंप्स को एक्सपोज कर दिया सोहेल खान के लिए। और ये वाकई गैर जिम्मेदाराना शॉट था, कप्तान को बिल्कुल जेब नहीं देता ऐसे मौके पर जब सामने 4 विकेटें गिरी हुई थी। या प्री प्लान खेल गए, ऐसे जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीछे बॉल होगा, रूम मारेंगे देंगे और कट मारेंगे, लेकिन बॉल आगे गिरा हुआ था। और जैसे आपने कहा कि गैर जिम्मेदाराना शॉट, बिल्कुल 15 ओवर के बाद 133 पर 5। मीर हमजा एक बहुत ही मशहूर कोच गुजरे हैं लाहौर में, अब्दुल रब, जिनने बड़े बड़े खिलाड़ियों की कोचिंग की। और वो एक बात कहा करते थे बैट्समैन को कि कभी भी अपनी स्टंप्स जो हैं ये बॉलर को दिखानी नहीं चाहिए। कासिम अकरम ने एक नहीं बल्कि तीनों स्टंप्स से दिखा दी। यहाँ इसका दोष आप शायद T20 क्रिकेट को दे सकते हैं, क्योंकि इतनी इनोवेशन हो गई है, बैटर्स के ऊपर प्रेशर होता है रन्स करने का, तो नई नई इनोवेशन वो लेके आते हैं। जैसे बॉलर्स बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी लेके आए, स्लो बाउंसर्स लेके आए, इसी तरीके से बैटर्स भी डिफरेंट तरीके से कोशिश करते हैं, रन्स की तलाश में रहते हैं। ये आपने सही कहा, क्योंकि आज का जो बैट्समैन है ना सिर्फ कई बार सामने से स्टंप्स दिखा देता है, बल्कि कई बार वो इतना आगे निकल जाता है कि पीछे से भी स्टंप्स बॉलर्स को नजर आने लगती। लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी अभी, कासिम अकरम ने इनोवेशन करने की ज़रूरत की। डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगे क्योंकि ये एक बड़ी विकेट है, बड़े मौके पे हासिल किया सोहेल खान ने। यहाँ खास तौर पर जब लोहा गर्म था और ये मैच का बड़ा ही नाजुक मरहला था और अब सिंध की टीम को वापस आने का खेल में पूरी तरह मौका मिल गया है। और आज कुछ पहले सेमीफाइनल में भी ऐसा ही हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम एक मौके पर लगता था कि शायद उनको भी 200 रन का सामना होगा, फिर मिड ओवर्स में, मिड इनिंग्स में उनके बॉलर्स ने अच्छा फाइट बैक किया
उनके पेसर्स ने, एहसानुल्लाह और अरशद ने, और वो टीम खेल में वापस आई और मैच जीत गई। अच्छा बाउंसर, पहले स्लो डिलीवरी फेंकी इनटू द पिच और उसके बाद ये गेंद बिल्कुल वाइजर के सामने से चली गई, सनसनाती हुई। या ऐसा लगा जैसे जान छुड़वाई है बॉल से। बहुत ही फ्लैट बैट मारना चाहते थे, क्या सोच रहे थे ये वही बता सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट की किताब में तो ये शॉट नहीं है कहीं भी। यहाँ पे अच्छा कम बैक है, मीर हमजा नए बॉल से भी अच्छे बॉल किए। यहाँ पे मिड ओवर्स में एक अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए। अच्छा बुल शॉट, ज्यादा जगह नहीं थी, इसके बावजूद इसको बजा लाए और 2 रन भी ले गए। न्याजी शॉर्ट पिच बॉलिंग का इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि आजकल आपकी जरा सी भी खामी जो है उसका शुबा हो जाए तो वो छुपी नहीं रहती। इरफान न्याजी बाउंसर पर आउट हुए 1-2 बार इस टूर्नामेंट में। यहाँ बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था इरफान न्याजी से। पिंडी लेग में हमें 1-2 इनिंग अच्छी देखने को मिली, लेकिन मुल्तान लेग में ज़्यादा चमक नहीं सके, क्योंकि फिनिशर का रोल है, आखिरी ओवर्स खेलने होते हैं, तो बेहतर एक्सपेक्टेड था इनसे। एक और उम्दा पुल शॉट, इस बार नहीं रोक सकेंगे फील्डर, हालांकि जाहिद थे और मिड विकेट से भी खिलाड़ी आ चले थे, लेकिन ये बल्ले की जद में आ गई बुरी तरह इरफान के। या यही शॉट ढूंढ रहे थे, प्लेसमेंट शानदार रही, 4 रन हासिल किए 16 के बाद 141 पर 5। एक बार देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये लेंथ इनकी कंफर्ट जोन में आ गई थी। 2 फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन बिल्कुल उनके दरमियान खेल के 4 रन हासिल किए। Blistering start at the top of the order from Faizan and Mohammad Akhlaq. Innings has lost its way a little bit. 4 overs to go, all to play for. Has he got enough on it? Just about Anwar Ali, sensational. This is T20 cricket at its very best. This man is a great athlete. That's what he can do when he joins the playing 11. Ever look at that? It's not just an effort. I think he's managed to pull it back. Brilliant. Airborne. Wow. The only thing the third umpire will be looking, did his foot touch when he took off for that leap? No doubt about that. The ball landed inside the field of play. Wow. Anwar Ali, take a bow. He's nailed that one, or has he? Not quite. Once again, high ball in the air. Sindh's catching has been good tonight. And a big breakthrough, the big hitting. Amir Yamin goes. Syed Mahmood has been exceptional tonight. He's mixing it up, he's changing the length. This time Qasim, it was Amir actually wanted to go big. And he is well calculated and he is delivering what Sindh requires. Amir Yamin gone on 3. Central Punjab are falling down very quickly, 143 for 6. Would you believe this? Central Punjab were 108 for 2 at one stage.
143 for 6. And time running out as well. Osama Mir is quite capable, but he came out last time. He's playing a shorter ball. But hey, they need to make sure they bat out their 20 overs. They had such a great platform in the power play that they can still end up with a decent total. 4 wickets for Zaid Mahmood, just giving away 18 when all the Sindh bowlers were being sent to cleaners by CP. It's brilliant performance from him. Big shot! Big shot! Wow! The bounce? Umpire Zamir Haider has been under tremendous pressure tonight. He's been called into action a few times. This is way back. This is cannoning into middle stump. He's not having a good night, umpire Zamir Haider. Oh, goodness me. He's being denied his fifer. He was deep inside, Irfan. I'm not sure, but you have to take the word for the umpire. Niazi is the key here. He's the big hitting man. Under immense pressure, he's only young. But this little passage of play can decide which way this game goes. Superb, Zaid Mahmood. Bringing all the skills in. Running hard. But just the single. Sindh has managed to take control of the reins now. Central Punjab strolling their way very rapidly in those early 67 overs. But this man took the responsibility. Splendid piece of bowling from Zahid. He finishes off with 4 for 20. Could easily have had a 5 for 17 gone. 145 for 6. This is Zamir Haider. He's been called into action many times. And that's Zahid's 4 for. Excellent take from Sarfraz. What a match, never easy. Once again, another good take in the deep. The high ball in the lights. .145 for 6. The start of this innings, we thought that Central Punjab might register 200 plus. The way they started, Clark and Faizan, but things are now under control for Sindh. Just need to clean it neatly. Osama Mir, you little ripper. That wasn't a half volley. Just cleared that front leg and opened the face of the bat. Boundary to begin the over. Joining the playing 11, Osama Mir today missed out the game, but that's what he can bring to the party. He's handy with the bat as well. Staying leg side-ish. He's a tall guy. Never try to hit it hard. Just timing it. Brilliant inside right. Out. Looking for 2. Aja, 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 he calls. He's a tall boy. Covers the length of the pitch quite easily. And looking for the 3rd. The throw was wayward. Sindh don't need to do that. 150 up, 152 now for Central Punjab. Sindh is under the pump, has been from ball 1. But have a look at that, the game awareness. Osama Mir running hard. And they realized that Sarfaraz is down. Grab that opportunity for the 3rd one. Sam with a vivid throw. Sam had more time to steady himself. 1 run extra conceded. The margins have been small in this tournament. Each and every run is vitally important.
in the air. Shouts of catch it. But it's gone over. Osama Mir. Irfan Niazi rather, the big hitting. Irfan Niazi taking Hamza to the cleaners. He's struggling. Mir Hamza is clearly struggling. The line, the length, the death overs. You're just putting more runs in your account. Had all the time to clear that fence. He's a tall guy with big forearms. Yeah, only mistimed hits can also go outside the fence. The kind of power these players have. And with the big bats. Pretty sure it didn't come off the middle of the bat. It's a long boundary too. You could hear Sarfraz yelling at Mir Hamza to ball towards off stump. Got all the protection, not now. The third man walks inside the circle. He got underneath it. Forget about that. This is out of the park. This is sensational from Niazi. Tremendous hitting from Irfan Niazi. He's having a delightful time out there. Juicy full toss. Look at that jab. That's the power he possesses. Low full toss. Always asking to be trouble against those big hitters. Not a big follow through at all. You just mentioned about the strong forearms. Just punched it. And it landed almost 15 yards over the fence. That is an incredible stroke by young Niazi. Change of angle. Slower cutter into the pitch. It's beaten fine leg. The chase is on. Looks like it's Saad Khan, substitute. He's on the park. This has been a big over so far. Could have been a better effort from that 45. It was way, but again, Mir Hamza should be looking to finish within the stumps. He's changed the angle. He's struggling clearly. Initially, he was brilliant with his bowling, but from few games, he's clueless. "21 of the over so far. Make it 22. Niazi went deep in the crease. But this time, he didn't have the pace or the length to work with. 18 gone, 167 for 6. That's the over. 22 coming off. Mir Hamza. Have a look at that long levers of Irfanullah Niazi. Just the jab. God, he has so much power. The last one, the best of the lot in my opinion. Don't have to do a lot wrong as a bowler against Niazi. Experienced Sohail Khan. Niazi looking around the onside field. Too cunning, too clever Sohail Khan. In swinging Yorker, went under the bat of Niazi. He was expecting it, that's why he charged down, just to turn it into a full toss. He's getting some shape now, Sohail, tailing it in. That's never easy enough option to maneuver with. Should stay in the crease, try to maneuver that one. However, the margin of error is very small. Third man is up, fine leg is up. Went deep as he could go. Charging but won't get the second. Anwar Ali is a good outfielder. He's a brilliant outfielder. That's an understatement, good. How about that effort saving 4 runs? It was 4 short traveling for a 6. Good to see some faces smiling. Wonderful atmosphere in the crowd. This is enthralling contest. Not a full house by any means, but a very decent crowd. Thoroughly entertained.
Wonderful batting by Central Punjab. Now finish yet. 10 more deliveries to go. Sohail Khan would be eyeing to bowl those Yorkers, but it's not easy to get it right every single delivery. They will get an opportunity to score a boundary. Sama now on strike. Straight down the ground, couldn't get underneath it. That's excellent bowling from Sohail Khan. There's 3 in a row that he's nailed it. He needs to do some damage control. Sohail Khan so far 3 deliveries, 2 runs coming. The previous one went for 22. You talk about partnerships in batting, you need those in bowling as well. Look at those eyes. Irfan Khan Niazi, he's searching, he's hunting. Yeah, he looked at onside and then over extra cover as well. Which way he want to go now? Well, he'll have more time to think now that Sohail Khan has aborted his run up. Slight change in the field now. Brought the third man inside the circle. Pressure is on. Looking for the ramp, too full now. Charging in for the second. Niazi will get it comfortably. Sohail Khan has stuck to his guns. He's looking for that full swinging Yorker. So far so good in this over. 31 of 22. That's what he can do. Irfan Niazi. Still no boundary. It's been superb over from Sohail Khan, but 2 deliveries to go. Got it on the full, will find the fence. Once Sohail Khan earned in his length and Niazi was quick to pounce on it. Little too predictable, Sohail Khan. Yes, he was looking for the Yorkers. Niazi knew it. And that's why he came down charging, turned it into a full toss. Slammed it. Really couldn't middle it, but got enough on it to race away for a boundary. And that's what they were looking for. 1 more delivery to go. How quickly it traveled. The sweeper wasn't too far away from that. This boy possesses immense power. These power hitters, the finishers, they are a rare species in this format, especially in Pakistan. This boy can make a name for himself. Head on in place, 45 sent down. I'm not sure about this field. Swing and a miss. Sohail Khan really bowled a sensational over under immense pressure. 8 of the over, 175 for 6. Qasim Akram did mention at toss that they're looking about something around 170. Got to 175. 1 over to go. He's very relaxed, Abdul Razak. He's always relaxed. Before the start of the game, he was cool as a cucumber. His team was preparing, and he had nothing to say because his preparations were done. The plans were in place. Give credit to the man, he was under fire. 4 defeats out of the first 5 and then 4 wins in a row. Asif knocks him over. Osama Mir looking to be a bit cute. Just moved too far across and missed it altogether. He's trying to capitalize that last over. He was looking for innovation and Asif Mahmood got the delivery right in the zone. Missed it. It was the length ball, never could have got underneath it. They've got their revenge now. The last over, hat-trick heroics of the other night. Could it be another one?
Osama Mir goes for 9. 175 for 7. Waqas Maqsood is the new man in. I was talking about Asif Mahmood's heroics the other night. That last over where he took hat-trick didn't cost many. And then he finished off the game with the bat. He's shadow practicing that scoop. I don't think that's a wise option against Asif. Just take a single, bring Irfan back on strike. That's what is needed right now. Do you think he will do it? I think he's looking for the ramp already. One leg is up in the ring. Well, he got a ball short enough. He's done the right thing. Calmness prevailed because now Irfan is on strike. That's how Osama Mir went. He's trying to innovate, just get another boundary going. Couldn't put back to the delivery. He'll take it, Asif Mahmood. Good start to the over, but he needs to finish strong. His natural action allows the ball to come into the right-handers. We've noticed with Sohail Khan as well, the ball is tailing in. He can be spot on with his lines and length. It can be difficult to get away. Excellent delivery, full and straight, but sliding down on the first impact with the naked eye. Looked like it could have slipped down. He has to nail each and every Yorker, because slight an inch of error and he'll be traveling over the fence. Good Yorker, just again, the tail in delivery as you were mentioning, it's never easy, especially you need to keep an eye till the last moment actually. Different plans for left-handed Waqas. Would he swing or will he look to just rotate? It's again full. Asif didn't know where the ball was. Almost ran into Waqas. Doesn't matter if Waqas is going to swing or not, or find the bat or not, because they're going to run it anyway. The moment Irfan saw that no one was paying attention to the ball, he ran away. I think with 2 deliveries left, an opportunity. If Niazi doesn't get a big hit away, he should try and play both these deliveries. Slight adjustment to the gear. What's his options? He's obviously going to target straight or mid-wicket. Will he charge down? That's my question. Excellent bowling. Great stuff. That inward angle is really cramping Niazi. He was giving himself room, but never found the length that he was looking for. He made that difficult for himself. He moved away, went deeper in the crease, even more so, and that kept on dipping on him. Maybe if he can take one step out of the crease or charge down, he can find some connection. Think across the line, go straight. Went with the angle. Field is set. Saim Ayub is a good fielder. The throw is good, and Waqas Maqsood is short. Good finish by Sindh. First Sohail Khan, and now Asif Mahmood. They've redeemed what Mir Hamza really bleeded runs, but these last 2 overs have been good. Just giving away 4 runs. Asif Mahmood has been exceptional. He nailed each and every delivery. That's the run out. Central Punjab just collecting 1 on that occasion. They reaches 179. And that's brilliant from them. They need to do some hard yard in from ball 1 Sindh. 46 in the last 5 overs. 22 of them came in 1 over. Sindh really were on a comeback trail until that over happened from Hamza, but Asif and Sohail came to the help of their teammate, and 2 good overs
The Sindh will be going in with the momentum. Central Punjab, if you'd given them 180 before the start of the game, they would have taken it. Central Punjab started off really explosively. Mohammad Akhlaq and Mohammad Fazan, good partnership up there. Akhlaq on 28, Mohammad Fazan was dismissed on 52. Qasim Akram, the skipper, he came in and went out of the block quickly, 25 of 18. Irfan Niazi, exceptional batting there, 36 of 27. He stood his ground till the last moment, and they have put a mammoth total of 179 on board. The bowling suffered at the hands of two openers in the power play, but the comeback was good. Zahid Mahmood was exceptional, 4 for 20. His spell really turned the game on its head in the middle overs. Wickets for Asif Mahmood and Sohail Khan as well, who was quite brilliant at the death. Well, it started off in a blistering mode. Akhlaq and Faizan had saved their best till today. That power play was the best of the tournament. This was a mammoth six. Absolute carnage inside the power play. The ball slid on very nicely, the new ball. Not all brute force, but some sheer timing. Showed moments of great stroke play, and there were plenty of them. None better than this. Uppercut and a good catch. Luck also ran in their favor. You have to say that. On another night, could have been different. But they made full use of the rub of the green. Raining sixes and fours. Zahid Mahmood came in and he took responsibility. That was the first dismissal. Akhlaq gone. And then some cheeky batting continued. Tayyib Tahir really couldn't maintain his balance and fell short of the boundary. Straight to the fielder. Qasim Akram came in and he started the way he always does. Exquisite drive off to the offside. This one was brilliant. Just pure timing and placement on that occasion. This luck towards Sindh, managed to get his third one. Zahid Mahmood, that was some luck running for Shoaib Malik. He got away with this, but not this time. Straight to the fielder, he was disappointed. Couldn't really perish it. And then Sohail Khan, dismissing Qasim, literally castled him. Irfan Niazi came in with the mood to push the pedal down. Look at that, just the wrist work. Really was a brilliant save from Anwar Ali. Amir Amin this time, he just found the elevation, not the distance. He went cheaply and Zayed got his fourth. But Niazi, his shot continued. He was the star of the death over. That was traveling all over. This one, I love that one. Just the jab. Charging down Sohail Khan. And he took each and every bowler and had to pay until this happened. This was Osama Mir actually. Couldn't really get that last over, extract runs. There was brilliant bowling from Asif, just giving away 4 runs. But they'll be very happy how they started things and ended them. 179 is the target for Sindh to chase down. They have the resources, but the execution needs to be spot on. 180. That is the target. We'll take a short breather and we'll come back with the run chase.
for the second semi-final. This is a massive game. What a performance from Central Punjab, who were out there when they won the toss and decided to bat first. Superb knock from a few of them, posting 179 for 8 and 20. Let's have a look at the batting order. Good solid blistering start from the openers. Mohammad Akhlaq on 28. Mohammad Faizan reaching his 50 on 52, gone. Qasim Akram came in and continued that momentum, 25 of 18. And Irfan Niazi finishing the job, 36 of 27. They all managed to put very challenging total to Sindh. Bowlers were under the pump, went for runs. Mir Hamza 49 in 4 overs, 37 and 3 for Anwar Ali. Suhail Khan was good, bowled some good overs in the end in the second spell. Zahid Mahmood 4 for 20, almost had 5 for. Well, the highest chase score in this year's National T20 has been 176, and that's with against Southern Punjab. 80th Southern Punjab scored 175. Sindh scored 176 to win that. That's the highest chase. Sindh has to score 180. So they've been there. They know what it takes. Central Punjab has been really good. They're required to win the last 4 matches, depend on the net run rate, but here they are in the second semi-final, posting a huge total. These two will be key. Sharjeel has to start from the word go. He cannot stick around and wait for his moment. He's got to attack the opposition just like Akhlaq and Faizan did. Yeah, they need to provide a decent start. They need to neutralize much of the threat of that 180 in the power play, but that doesn't mean to be reckless. They should be dividing that 180 over the passage of time. You need to have a target for the power play and then the middle overs, but they have to move very quickly and play some good cricket in these 20 overs. He has the highest score in this year's National T20, 107. Not out. His best is 117. He's got to choose something between that if he wants Sindh to qualify for the finals. And don't forget his partner, Saim Ayub, who's been in tremendous form as well. So these two will hold the key. Remember that Sindh is a bit fragile in their middle order. Saud Shakil has been okay in the last 2 innings, but otherwise they don't have much firepower. They'll have to leave something chaseable in the last 5 or 6 or 7 overs for Anwar Ali and men. That's expected, isn't it? When you got 2 left-handers, especially Sharjeel, you'll get off-spinners trying their luck. Qasim and Shoaib Malik did that, shared 8 overs between them and bowled beautifully. It was against the same side, Sindh. Yeah, the idea is not to provide pace, especially to Sharjeel Khan. Just toss it up nicely, invite him to go big, and maybe a miscued shot can end up in hands of any fielder. They've packed the offside. They've got deep mid-wicket and long one. 180 to win, Sindh. Runs, boundary straight away, 2 full. Sindh are on their way with a 4. Don't ever underestimate this guy. He loves to bat, he loves to dominate and play his shots the moment he walks out. Finding that delivery in his zone. Good forward footwork and just that power. Follow through and first boundary. In the air, oh, it's gone through and it's going to the boundary.
It's just rolling its way. And Hunain Shah is just slipping away here and there. They'll check the boundary, but this was a chance. Will this cost Central Punjab? What Hunain did good was to go for the catch, but not on this end. He should have topped the boundary once gone past him. But they needed the wicket. He always expected to put the dive in and get that catch. I think it just kept on sliding away. Now, probably another angle might clear things up. Yeah, this will be a tough call from this angle. He's tried to slap it back further. I think he's folded his legs. He's done well. It might be ruled in favor of the fielding side. If that's the case, then it's just 2 runs. Oh, he's given it. There's a boundary. Love to see if dropped short or did he drop the catch. Hunain Shah. Did keep on dying on him. Coming back for the second. This man is dangerous as long as he's out in the middle for Central Punjab. Single to end the over. It's 11 off it. That's the opportunity. Oh, it fell short. It did fell short. You have to give 100% for the effort. Hunain Shah, it was expected of him to dive forward. Nearly got away. That's what the expression says. First over, 11 runs from Amir Yamin. Amir Yamin is now coming into the rest. Sorry, it was Qasim Akram. Amir Yamin is also at times a dangerous customer to handle. But it all depends on what he chooses to bowl, the line that he chooses, because Sharjil's reach is big. So what we've seen time and again is if you keep it on top of off, you'll find it tough. Yeah, anything slightly away from him on 4th, 5th stump, he'll slash hard into that offside. And then you cannot afford to bowl on his pads, slam you there into the fences. Be very immaculate where you pitch that ball. It's not that express pace bowler, Amir Yamin. The swing, yes, that's what he can possess. It's a 6-3 field. 2 men in the deep square leg. And now they're having a deep backward point. Third man's come in. Just in case Yamin bowls a wide one outside the off stump and Sharjil slashes his bat. This is an interesting contest, second semi-final. That's the one I'm talking about. Just around top of off. Doesn't allow him to straighten his arms. That's the corridor. Keep him under check. It's beautifully bowled. Nipped away the moment it pitched. Good ball to start with. He needs to do that consistently. Just cramp him for room. Be interesting, Marina. The man at, I mean, it's deep backwards point. Again, trying to slash or a very wide spine third man. And that's exactly the shot that he attempted now, Sharjil. That's the shot the man is for. But that's a very
tight area. Anything away from that short third man, it's a huge gap there in that prediction. We've seen this outfield and it's rapid. Gone! That's it! Wrap up, back up and parcel. What an over, what a line. Amir Yamin. That's a huge wicket. Sharjeel Khan all set up by Amir Yamin. He made sure the two deliveries, the previous ones, kept going away, and this one just slightly straightening up. He was expecting it to go away, the outswing, but this time he was castled by Amir Yamin, brilliantly bowled. They've got the big man. Sindh was heavily relying on him. Gone for 11, 11 for 1 Sindh. Central Punjab has just peaked at the right time in the tournament. It will be the 5th consecutive game they'll win if they win this semi-final. Otherwise they were out. One game they would have lost, they would have been out. So if Saud Shakil, the captain of Sindh, walks out at 3, he's recently found his touch in the last 2 innings. He'll require to score a lot of those runs from his bat tonight if they are to stay a night longer in Multan. Final is tomorrow in the evening. What an over this is. 2 dot balls and wicket. That's worked away. Should be a couple. Easily completed. Ahmed Daniel in the deep. You got to love the way he's set Sharjeel Khan up. Super way, and Marina will explain it to you exactly what happened. 2 deliveries kept on going away, and this time he was expecting that outswing, but it just kept the line and the bat traveling. The path wasn't good. Coming from the outside, huge bat and pad gap. Brilliant setup by Amir. He's a very smart bowler. Slip in position. He's such a lovely batsman to watch. He's so textbook. No regard whatsoever. It doesn't matter what happened on the previous deliveries. Have a look at that. Sheer timing. Oh, it's a delight to watch. That punch off the back foot. Brilliant. This is 2 different style of players. Now it's the same line. Sharjeel's trying to cut it behind square on the offside, and he's playing with a vertical bat and playing it in front of the square around cover, extra cover. And that way you don't have the fear of chopping it onto the stuffs as well. Whenever you hit the ball hard into the ground, you have the fear that the fielder will receive it on a good bounce. Still take the chance and take a single. Good running though. Good loud call. Testing Qasim Akram. He's brilliant in that point area. 2 gone, then the 18 for 1.
previous over, a wicket, a boundary, a couple and a single. 7 runs. Waqas Maqsood has been impressive since he's joined the Central Punjab team. In fact, the squad. He's been very accurate. He's a tough bowler to put away, even in the power play. Oh, sharp rise, good bounce, scary. Been very effective against the right-handers. Now he's up against 2 technically sound left-handers. But the swing, that's encouraging. That's what he relies on. So he loves to hang on to the back foot and just slash into the offside. Never really commits on the front foot. That's one area where Waqas can exploit. Directed? No. You'll see this a lot. So then Saim, quick between the wickets. They'll wait for the delivery to come into their arc, into their zone. Otherwise, they'll just keep on testing those fielders inside the ring. What is Saim doing? In fact, was Saud Shakil the captain? Is his call? They know they cannot afford a lot of dot balls. And a big threat has been removed by Central Punjab. Sharjeel Khan, he was the one they were heavily relying to score runs fast. Now they need to rotate strike, and these two, Saim can go big, stylish. In the air, catch it is the call. This could be out. This could be out. Oh, he's dropped it. Faizan there. I thought he almost got there. He's got his fingers to it, so that will be recorded as a drop. No matter how tough it is, it's a semi-final. Very late to commit to that catch. Faizan couldn't really probably judge where it was traveling. Had to stretch himself to put some hand. Couldn't really wrap it around. Could have been 2 down. Waqas is disappointed. Interesting stat here. Sindh has won 3 games chasing in this tournament, and all 3 games, Sharjeel Khan wasn't dismissed in the power play. So if you go by superstitions, I'm sorry. It's going to be tough. And from cricketing terms as well, if you expect Sharjeel to give you a quick fire 50, then someone else has to do it tonight. Oh, he almost exposed his stumps. My word, how did he get away from that? He went across to play it to fine leg. He's just missed everything. That's very unlikely of Saud. I don't know where it did hit him. I thought it did knock out the bails, but no, he can't believe it. Got some bat on it and then onto his body. But yep, that's very unlikely. Whenever he's playing, whenever he's in control, he plays in front of the square. It's too risky to go that innovative early on. Yeah, you're right. He's tried to sweep that. It's from his bat onto his helmet. Just a wiser. So concussion test, the SOPs have to be followed. We'll have to just wait. So lots has happened here. Sharjeel's wicket. Hunain's half a chance to catch, and then Faizan dropping one. Things have to just calm down a bit. It's all good. The physio has given the green light. We can get on with the game now. In previous games as well, Sindh was struggling. They weren't that explosive in the middle order.
What they relied on was Shajil Khan or Anwar Ali at the back of the innings. That's the last drop. Wanted to go over that infield time on one leg. He was late, very late. Should have been taken actually. I did ask Saud about the lack of explosiveness in the middle order, and he assured me that we'll watch it tonight. So I'm waiting for that. No run. Sent him back. End of the over. 3 gone, 20 for 1. Now that Shakil is out of equation quite early for Sindh, chasing this huge target. Saim and Saud, they both like to take some time. They will play their shots, but not forcefully. That's where they struggle. They cannot craft those types of shots. Now it's a 5-4 field. And a shot. You don't need fielders for those. All the way flat for a 6. This guy can bat. If you're pitching at that shot to Saim Ayub, he will punish you. Again, that angle, that line helped him to free his arms. Got good stable base and full follow through. Amir Yamin, you're not that quick. This length is not going to threaten Saim. Good comeback delivery. Don't be deceived by Amir Yamin. He will not come across to you as a tall, fast bowler in your face. He's skiddy. He can generate that extra bounce when he wants. And he's smart. That's the length, that's the line. He's getting that shape. Make it count in every delivery. Pitch it up. Keep on taking it away from the batters. There you go. This time it's just taking the pace off. That's how the ball just rolls on the bounce to the keeper. He's still preferring that angling across the left-hander. He wants him to play on the onside. He's trying to negate that swing. Saim came down. It did keep low. But that shot, as you say, forcing it into the leg side. He can clear offside quite easily. Love to play that lofted extra cover drive. But it's just nagging length of Amir. Catch it is a call, but there's no point. That's going all the way. This time straying on middle leg, and he's punished. That was a wow shot from Saim. He's just literally chipped it. I'm not sure if it traveled all the way. Yes, it did. Superb timing on this one. He's a class act, Saim. Technically sound, yet effective. This time Amir Yamin was taken by surprise. Wasn't a bad delivery, just the execution from Saim was spot on. Have a look at that. Stand and deliver, and that too into the leg side. That elbow coming across. A
Again, doesn't want to run. He wants to face everything. 2 sixes, 3 dot balls in the over, but nevertheless it's 12 in the over already. They are also trying to keep up with that run rate. At the moment, it's 8.35, but they don't want that required to creep up over 10. Saim Ayub is required for that. In the air, catch it is a call. It had to go over that third man fielder because he's trying to slash one on the onside. He's always going to take that outside edge. Nevertheless, still gets them 16 of the over, 36 for 1. दूसरा ओवर लेकर आए हैं वकास मकसूद अपना पवेलियन एंड से। गेंद अच्छा बल्ले पर आ रही है और इससे दिलचस्प मैच की हम तवक्को कर नहीं सकते थे। इससे दिलचस्प सेमीफाइनल सिंध बनाम पंजाब 180 रन्स के हदफ का सिंध की टीम पीछे कर रही है और साइम अयूब जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, ये देखिए पिछले ओवर में जो स्ट्रोक्स खेले बड़े काबिले दीद थे, दौड़ें लगवा दी उन्होंने सेंट्रल पंजाब के फील्डर्स की। जी हाँ, तैयारी शायद शर्जील खान की हुई थी, लेकिन वो भूल गए थे कि साइम अयूब बहुत स्किलफुल हैं और जितना स्मूथ खेलते हैं, जिस तरीके से टाइम करते हैं, एलिगेंस है और फ्यूचर है ये। शायद थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन सईद अनवर की याद दिलाते हैं ये। यहाँ सईद अनवर को ही देखकर इन्होंने बैटिंग का भी आगाज़ किया था। इस बार बीट हुए, ये 2 दिन पहले जब इनसे मुलाकात हुई यहाँ मैदान पर तो ये बता रहे थे सईद अनवर से इंस्पायर होकर इन्होंने ये स्ट्रोक्स खेलना शुरू किए और बेशतर इनके जो स्ट्रोक्स हैं उनमें झलक है सईद की। जहाँ एफर्टलेस टाइम करते हैं, जोर से नहीं मारने जाते हैं, जो जिस तरह से उन्होंने 2 छक्के हासिल किए पिछले ओवर में, वो कमाल के शॉट्स है। मेरे लिए तो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट जिन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा। टेंशन है सिंध के कैंप में क्योंकि बड़ी विकेट गिर गई है, काफी रन्स पड़े हैं अभी 143। इस बार फिर खूबसूरती से खेल दिया, एंगल को यहाँ इस्तेमाल में लाए किसी मुश्किल के बगैर। पानी लगे ऊपर से 4 रन्स, कोई मौका नहीं था फील्डर के लिए। या बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट, ये गेम अवेयरनेस है। जानते थे कि फील्डर सर्कल के अंदर है, बहुत शानदार तरीके से सॉफ्ट हैंड से टाइम किया और फील्डर के ऊपर से 4 रन हासिल किए। ये बहुत ही टैलेंटेड हैं। यहाँ ये लैप शॉट था, लैप स्वीप हम इसको कह सकते हैं, पूरी तरह इख्तियार में थे। नजरें तेज हैं और कलाई इनकी लाजवाब है। शॉट को चेक किया और तेजी के साथ 1 रन ले गए। इस मौके पर अगर दोनों टीमों का हम मवाजना करें तो सिंध की टीम बिल्कुल भी पीछे नहीं है। 1 विकेट गंवाने के बावजूद उनने जो रन की रफ्तार है, इस शॉट की मैं बात कर रहा था। मेरे लिए ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट है। जिस तरीके से उन्होंने टाइम किया है, एफर्टलेस, नीचे देख के पावर जनरेट की, कमाल का शॉट है ये।
वकास मकसूद ने अच्छा ओवर किया था पिछला, लेकिन इसमें 6 रन हासिल कर लिए हैं सिंध के बैटर्स ने। और ऐसा लगता है कि शर्जील खान के आउट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों अब रिदम हासिल कर रहे हैं इस इनिंग में। अहम पार्टनरशिप है ये इस मैच की। और इससे खेल दिया पॉइंट के ऊपर से और बाउंड्रीज रुकने में नहीं आ रही। पहले साइम के एंड से, अब साउथ के एंड से, और सिंध का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे शॉट खेलते हुए, क्योंकि बाहर बॉल किया था। इधर इंटेंट इनकी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से थी, थिक आउटसाइड एज हुआ ये। लेकिन ये इतना अच्छा पिच है, इतना पेस है इस पिच में कि जो भी बॉल एज भी होता है और अगर फील्डर से दूर है तो वो 4 रन के लिए चला जाएगा। ये पार्टनरशिप बहुत कमाल की, 35 रन पर पहुंच गई है। फ्रस्ट्रेशन वकास मकसूद के चेहरे से झलकते हुए। इससे पहले हमने देखा था शोएब मलिक सिंध के खिलाफ बॉलिंग करने के लिए आए थे और उन्होंने आज़ादाना इनको बैटिंग नहीं करने दी थी लेफ्ट हैंडर्स को। आज अभी तक हमने उनको गेंद करते हुए नहीं देखा। 47 पर 1। शर्जील खान 11 रन बना सके, लेकिन तब से लेके अभी तक बहुत डोमिनेट किया है सिंध ने इस इनिंग में। 22 रन साइम अयूब ने खूबसूरत तरीके से बनाए हैं। सऊद शकील ने 14 रन बनाए हैं। उमैर बिन यूसुफ, सरफराज, दानिश, अनवर अली, आसिफ महमूद, ये सभी बैटिंग कर लेते हैं। तो एक जहन में होगा सिंध के कि ये टारगेट जो है तारिक भाई चेज हो सकता है। यहाँ बिल्कुल हो सकता है। सिंध की टीम ने 2 मैचेस जीते भी हैं। शाम को दूसरी बैटिंग में इसलिए कासिम अकरम के चेहरे पर परेशानी के आसार देखे जा सकते हैं। अब सबसे तेज बॉलर आए हैं अहमद दानियाल सेंट्रल पंजाब के। शॉट खेला ज्यादा, इस गेंद को स्क्वायर के पीछे खेलने गए थे लेकिन ये तेज आ गई। ये सबसे अहम 4 ओवर्स होंगे सेंट्रल पंजाब और सिंध दोनों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मिडिल ओवर्स में ये बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, काफ़ी तगड़े हैं। 19 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, रिस्ट मारते हैं पिच पे और हार्ड लेंथ इस्तेमाल करते हैं। बहुत मुश्किल होता है बैटर्स को उस लेंथ को निगोशिएट करना। यहाँ पे अब अगर सिंध इनकी ओवर्स आराम से गुजार ले तो डेफिनेटली काफ़ी चांस हो जाएगा। अभी भी फाइन लेग को दायरे में रखा गया है। ऑन साइड में मिड विकेट और मिड ऑन के फील्डर भी 20 गज के ही दायरे में, लेकिन ये गेंद चली है मैदान के बाहर। एक और शानदार छक्का। सऊद बड़ी आला फॉर्म में हैं और उसे कैच करा रहे हैं आज के दिन इस सेमीफाइनल में भी, बल्कि साइम थे। जी हाँ, ये इनोवेशन है, ये T20 क्रिकेट है। ये एक मॉडर्न डे क्रिकेटर है जो विकेट के चारों तरफ हिट मारना जानता है, टाइम करता है एफर्टलेसली। बहुत ही शानदार शॉट, गेम अवेयरनेस कमाल की, टाइम किया बॉल, और ये इनिंग देखने के काबिल है। यहाँ स्पिनर्स का इस्तेमाल करना होगा कासिम अकरम को जल्द या बदेर, क्योंकि दूसरी सूरत में ये खेल जो है बड़ी तेजी से उनके हाथ से निकल सकता है। ये मुकाबला 24 गेंदों में सेंट्रल पंजाब ने अपनी 20 सेंचुरी बनाई, 32 गेंदें लगी हैं सिंध को ऐसा करते हुए। हम फास्ट बॉलर्स की बहुत बात करते हैं, फास्ट बॉलर्स बहुत पाकिस्तान में ऊपर के सामने आते हैं, लेकिन आज साइम अयूब को देख के बहुत खुशी हो रही है कि एक बैटर, हमें इस किस्म का कमाल बैटर देखने को मिल रहा है जो कि एक हमारे सईद अनवर की याद दिला रहा है। जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, अच्छे दिमाग से बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा स्कोर कट और उतना ही अच्छा जवाब। फैजान थे फील्डर कवर पॉइंट पर, देखिए अच्छा रोका उन्होंने, खासा फोर्सफुल शॉट था। तो यहाँ हम देख सकते हैं 50 से ज़्यादा रन्स इस वक्त बन गए हैं और जब आप 180 रन्स के हदफ का पीछा कर रहे हूँ तो
50 रन जो हैं ये मुनासिब समझा जाता है पावर प्ले में ये स्कोर। इसके माने ये है कि सिंध की टीम इस वक्त पूरी तरह पटरी पर है। मिडिल ओवर्स में बैटिंग का फन वैसे ही जानते हैं, स्लो डिलीवरी करने गए थे। हाँ, जो बात है बिल्कुल आपने सही कहा। ये पार्टनरशिप अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 45 पर पहुंच गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता साइम को देखा देगी। साउथ शकील भी अपनी फॉर्म हासिल कर रहे हैं। जोर से मारने गए थे, ये इनको ख्याल करना होगा क्योंकि अहमद दानियाल ऐसे बॉलर हैं जो आपको ज्यादा वक्त नहीं देते हैं। पढ़ने के बाद एकदम बॉल बैटर की तरफ आ जाता है, तो ऐसी लेंथ डिलीवरी से ख्याल रखना होगा, विकेट बचा के रखनी होगी। सिंध ने छठी बार 50 का हिंसा अबूर किया है पावर प्ले में और ये एक इनकी कामयाबी का बड़ा राज रहा है क्योंकि सिंध की टीम से पहले पावर प्ले में इस तरह की बैटिंग नहीं कर पाते थे। ये परेशान हाल है हुमायूं और अब्दुल रज़ाक। एक बार फिर रफ्तार में रद्दोबदल किया, लाजवाब बॉलिंग अहमद दानियाल की। तकरीबन झांसा दे चले थे साइम अयूब को 56 पर 1। जहाँ ये लकी ड्रॉ हो रहा है किंगडम वैली की जानिब से नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल के मौके पर गुलाम हुसैन शाहिद जो चेयरमैन हैं किंगडम वैली के, वो देखिए ये लकी विनर का टिकट उन्होंने निकाला है। आज जितने भी टिकट होल्डर्स हैं इस सेमीफाइनल के वो सभी उम्मीदवार हैं मोटर बाइक मिलने के। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि क्राउड क्रिकेट भी एंजॉय करे और लकी हों तो तोहफे भी लेके जाएं। कमाल। लेकिन यहाँ पे एक कमाल का मैच चल रहा है। 6 ओवर्स में 56 रन बना लिए हैं। रन रेट जो इस वक्त चल रही है वो 9.33 की है और रिक्वायर्ड जो है वो 8.86 की है। तो पलड़ा जो है सिंध का भारी है। मुल्तान शहर की जो सड़कें हैं ये मोटर बाइक चलाने के लिए अच्छी हैं, काफ़ी हमवार हैं। बिहाड़ी रोड से लेकर आप शहर में किसी भी तरफ निकल जाएं, गुलगश्त कैंट की तरफ। और ये जो विकेट है ये भी बड़ी आला है ड्राइव्स के लिए। लॉफ्टेड कवर ड्राइव, सऊद शकील ने अपनी महारत दिखाई और साथ साथ अपनी बैटिंग का जौहर भी इस शॉट पे। यहाँ पिच तो अच्छा है लेकिन इस शॉट के बारे में क्या कहेंगे, बहुत ही कमाल का इनसाइड आउट। बड़ी हवा दी थी लेकिन साउथ शकील जितने टैलेंटेड हैं ये मिस आउट नहीं करने वाले हैं। एक ठप्पा लगने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन पार और आहिस्ता आहिस्ता साइम के साथ साथ अब साउथ भी रंग पकड़ते हुए। यहाँ दूर से भी शॉट खेल सकते हैं इस पिच पर जो बड़ी ट्रू है। रात के वक्त गेंद बिल्कुल रुकने में नहीं आ रही, थ्रू द लाइन खेल सकते हैं स्पिनर को। ये अच्छी खबर है सिंध के लिए। देखिए शुएब मलिक बड़े आजमुदाकार और बहुत ही ज़हीन ज़ीरक बॉलर। बाउंड्री लगने के बाद अगली गेंद और उन्होंने दोबारा फ्लाइट दी, दावत दी बैट्समैन को। चांस तो लेना होगा क्योंकि विकेट की ज़रूरत है यहाँ पे सेंट्रल पंजाब को। डिफेंसिव बॉलिंग से कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ 50 रन की पार्टनरशिप बहुत ही उम्दा। क्रेडिट ज़्यादा जाएगा साइम अयूब को जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर हटाया है साउथ शकील से। यहाँ जो है स्कोर अब 62 है, एक खिलाड़ी आउट हैं। अगले 10 ओवर्स में जो सिंध की टीम यहाँ 8 रन की औसत से भी अगर ये रन बनाने में कामयाब हुए तो भी आखिरी जो 4 ओवर्स होंगे फिर उनमें मुश्किल नहीं होगी। इनको 10 से कम ही औसत दरकार होगी, 9 के आसपास जो बनाई जा सकती। विकेट इनके हाथ में है और बाल बचे, प्ले डाउन हो चले थे तकरीबन हाथों में खेल लिया था सऊद ने शुएब मलिक के इस बार। यहाँ जोर से हिट मारने चले गए थे, एक बार फिर घबरा नहीं रहे हैं। ये एक्सपीरियंस है शुएब मलिक का, स्लो बॉल कर रहे हैं, यही सही तरीका है। लेकिन दूसरी जानिब दोनों बैटर्स की फॉर्म कमाल की है,
कोई मौका नहीं दे रहे हैं, कोई गलत शॉट नहीं मार रहे हैं, कुछ अनयूजुअल चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा शॉट खेला, मिड ऑन के फील्डर से रोकने में कामयाब हुए तैयब ताहिर। और खास बात यह है साइम अयूब की कि ये सिर्फ फास्ट बॉलर को ही नहीं बल्कि स्पिनर को भी हुनरवरी से खेलते हैं। और अब इस इनिंग्स को टूल देने की ज़रूरत है दोनों खिलाड़ियों को। सऊद शकील अच्छी फॉर्म दिखा रहे हैं, अच्छी T20 फॉर्म। ये 7वां ओवर जाता रहा, 64 पर 1 सिंध। अच्छे तरीके से शजील खान ने अपनी इनिंग का आगाज किया था, थोड़े लकी भी रहे, कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद एक कमाल की डिलीवरी आमिर यामीन की जानिब से विकेट ले उड़ी। और उसके बाद तो ऐसे लगा जैसे साइम और सऊद का शो शुरू हो गया। जिस तरीके से अथॉरिटी से बैटिंग की, चांस भी मिला, और साइम अयूब ने ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट खेला है। का देखा देखी आहिस्ता सऊद शकील भी रन्स बनाते रहे, और साइम अयूब ने दिखाया कि आप चारों तरफ ग्राउंड के रन्स कर सकते हैं। और इस स्टेज पे सेंट्रल पंजाब ने 81 रन्स बनाए थे, क्योंकि उसकी मेन वजह थी उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप इखलाक और फैजान की। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है सिंध, जिस तरीके से ये पार्टनरशिप चल रही है ये कैचअप कर लेंगे। सेंट्रल पंजाब की गाड़ी तकरीबन रुक गई थी 100 रन्स मुकम्मल करने के बाद, और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा तकरीबन 10वें से लेकर 17वें ओवर तक। और फिर आखिरी 3 ओवर्स में दोबारा उन्होंने उड़ान भरी। कासिम अकरम जो हैं शोएब मलिक के साथ अब दूसरे एंड पर ऑफ स्पिन करेंगे, क्योंकि अभी भी दोनों ही लेफ्ट हैंडर मौजूद हैं। और ये लाजवाब छक्का, साइम अयूब बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे सेंट्रल पंजाब के कप्तान को, और इस बार भी आड़े हाथों लिया। कमाल का शॉट, लेंथ बहुत जल्दी पर रख ली थी, ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन देखिए ये छक्का बहुत मजबूत है, बहुत दूर जा गिरा। एरिया भी सही चूज किया मिड विकेट के ऊपर से। ये पिच बहुत शानदार है, यहाँ पे हर तरह का शॉट लग रहा है। ये बैट स्पीड बड़ी आला थी, क्रीज को भी आला तरीके से काम में लाए। दुबले पतले हैं, लेकिन जब ये शॉट खेलते हैं तो बिल्कुल हिला कर रख देते हैं। रिस्ट वर्क इनका काबिल दीद है, तो वही जो खूबी है इनको दूसरों से मुनफरिद बनाती है। इस टूर्नामेंट में इन्होंने ओपनिंग में सबसे ज़्यादा दिल जीते हैं, और आज ये मुल्तानीगर्स के भी दिल जीत रहे हैं। यहाँ जो बात है, बिल्कुल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, टाइमर हैं और एफर्टलेस छक्के मार रहे हैं, ये सबसे खुशाइन बात है। ये साहब भी एक ज़माने में विल्स कप खेला करते थे, ये बहावलपुर के लिए ये अच्छे क्रिकेटर थे, इन दिनों ग्राउंड्समैन है। नासिर जाम 110 रन 77 बॉलें, और इस ओवर में पहले बॉल पे 6 रन आ चुके हैं। क्या लगता है आपको, कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो उनको यहाँ पे ये पार्टनरशिप तोड़ेगा? कौन ऐसा स्टैंड अप करेगा सेंट्रल पंजाब के लिए, इस पार्टनरशिप को तोड़ेगा और मैच में वापस लेके आएगा? या हुनैन शाह और जो अहमद दानियाल हैं, उनमें ये खूबी मौजूद है कि वो फाइट कर सकते हैं। और गेंद हवा में, हाथों में, और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले सऊद शकील ये कायदे बैठे। इस बार टाइम करने से कासिर रहे, सीधा ड्राइव करने चले गए थे। एक बहुत बड़ी विकेट, फाइनली सेंट्रल पंजाब इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हुआ। कॉट एंड बोल्ड कासिम अकरम की जानिब से एक बार फिर एड दी है, यही क्वालिटी है। स्लो किया है बॉल, शायद बल्ला थोड़ा स्टक हो गया, लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलना चाहते थे और आसान सा कैच कासिम अकरम को दे बैठे, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बहुत शानदार इनिंग। 22 रन बनाए, लेकिन अच्छे टाइम पे। 71 पर 2 सिंध।
कप्तान सऊद जो है कॉटन बोल्ड हुए कासिम के हाथों, और ये विकेट उमैर बिन यूसुफ को पिच पर ले आई है। एक और बड़े बासलाहियत बैट्समैन, और ये भी अपना मकाम बना रहे हैं। अच्छा स्ट्राइक रेट है इनका 135 का। कासिम अकरम घबराए नहीं, छक्का लगने के बाद भी उनने विकेट लेने की कोशिश की, क्योंकि जानते थे कि इसके सिवा चारा नहीं, विकेट ही खेल का नाम है इस सेमीफाइनल मैच में। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कल सदर्न पंजाब एक टाइम पे बहुत आसानी से मैच जीत रहा था और विकेट्स नहीं मैच का पासा पलटा था, तो बिल्कुल सही आपने कहा, यहाँ पे सेंट्रल पंजाब को भी विकेट्स ही हासिल करनी है, क्योंकि बैटिंग काफी है सिंध की। अच्छी डिलीवरी, सऊद शकील जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और इस बार उनके खता ये सेंट्रल पंजाब की खुशी बन गई। यहाँ जमीन पर खेलना चाहिए था, और एक बार फिर ये उसी तरह का शॉट था, मिलता जुलता था जिस तरह सऊद कॉटन बोल्ड हुए, तकरीबन पहले खेल दिया था उमैर बिन यूसुफ ने भी। यहाँ स्लो बॉल कर रहे हैं, यही क्वालिटी है, इसीलिए बैटर्स को मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनको शॉट बनानी पड़ रही है। इस बार भी स्लो बॉल किया, इसलिए टाइमिंग आउट हो गई। और शायद ये जो ये उनकी किताब पढ़ी है, उनकी किताब का जो वर्क है, जायद महमूद ने जिस तरह की बॉलिंग की थी, उनने अपनी रफ्तार बहुत आहिस्ता रखी थी। ज़्यादातर गेंदें जो थी उनकी 80 की रफ्तार से कम आई थी, और उसी पर वो 4 विकेटें ले गए थे। कासिम अकरम और शोएब मलिक भी यही कुछ आजमा रहे हैं। 72 पर 2 किंगडम वैली की जानिब से आज यहाँ पर लकी ड्रॉ का ऐलान किया गया था, और ये विनर हैं आज के पहले खुरम शहजाद, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, वो अपना इनाम ले रहे हैं गुलाम हुसैन शाहिद, चेयरमैन किंगडम वैली से। और अब वो जा सकते हैं इस नई नवेली मोटर बाइक पर सवार होकर, घूम सकते हैं मुल्तान की सड़कों पर। Great prize and many congratulations to Khurram Shehzad, who was the first winner of the bike from Kingdom Valley. This game, Sindh were in cruise control before they lost the skipper in the last over. Tantalizingly poised, 72 for 2. Osama Mir 52 wickets at average of 30 and economy of 7.74. Catch it was the call. He's got to stop that. Oh, he's done well. Waqas Maqsood, he's put everything behind it. His body, his face, his hands. Have a look. You can't fault him for effort, 100%. The technique very ungainly. Not looking very natural at diving. Somehow got something behind the ball and stopped it. It was almost like a header. It's an edge. The runs are coming from Sam Ayoub's bat. Don't worry about how they're coming. CP won't like it. But nevertheless, Sindh -4. Hardly see him change his expressions, giving some room to open up that offside. Osama Mir has been in good nick, but at this stage, no slip. Still 102 required of 68 deliveries, 69 deliveries. That's the last wicket. Too much bottom hand in that. Cotton ball, Qasim Akram, the captain. He's looking good, so Shakil kept the scoreboard rolling. There was a bit of a hesitation from Umair bin Yusuf. I tell you, if the ball was collected cleanly by Malik, there was trouble. There had to be a run out. Shoaib Malik just mistimed his steps. There you go. He kicked the ball before he got into his hands.
Yeah, there's a lot of headers and kicks going on at the moment. Nine of the over. They've already coming up with the run rate required. Every time you watch Sima Yu play, he really impresses. 9 of the over, 82 for 2. Current is 9.11, required is 8.9. Another wicket could change that. Sarfaraz, Danish Aziz, Anwar Ali, Asif Mahmood. The batters will have to finish this off if they want to win this. And the key would be Sima Yu. They need to stay ahead of the rate. The entire tournament we've seen that last 5 overs of Sindh's batting innings have been their weakest link. As long as they stay ahead of the rate, have enough batting to cope with that run rate of 8 or slightly less than 9. But anytime in the last 5 overs it goes up above 10 and 11 or 12, they really struggle. Emma Daniel was hit for a 6 of the first ball in this first over, and then he pulled back everything, bowled a good one. Remaining 5 deliveries were pretty much in control. This particular change is to get that wicket. This will decide the direction of the game, the weight, which side is it falling more. Should be a thrilling passage of play. Sima Yu look to take on Ahmed Daniel. Daniel is quite aggressive himself. Oh, Clark just giving away a freebie. So this is what I'm talking about. Ahmed Daniel will test you with those sharp ones. This could be the finger breaker for the wicketkeeper. Cannot lapse in concentration when you're behind the stumps. It looked like a regulation take, but it really surprised the Clark with the pace. Like I was saying, Ahmed Daniel is quite aggressive. He's been generating good pace. Under lights, the ball is sliding, and he is a skiddy bowler. That'll be a great contest here. Umair is a regular red ball opener, so he's quite accustomed to playing good pace bowling. That probably will work well for Sindh. Oh, on the bounce. He's trying to work that round to third man, but that's really a genuine edge. Just didn't carry. Even at this late stage, there is a little bit of seam movement. Jack back, cramped Umair for space. And surprised. Clark done well there. Makes room and slashes at it. Will come back for the second throw. Has to be good, has to be flat. Yo, very, very close. They'll go upstairs, but looks like he's home. The bounce really took the pace off the throw. And Akhlaq also had to drag it from quite high. Probably that would have given Umair enough time to drag his bat in. Still, third umpire wants to have a look. Look at the height of that throw. And safe. Correct call, made it. Option 2 from Qasim Akram's strategy could be, if they are not getting any wickets, which I'm pretty sure they'll try to, keep Umair bin Yusuf on strike as much as possible.
And when Umair is there, he'll try to bowl those sharp bounces at him so that they're dot balls, provided Akhlaq gathers them cleanly. That's a good shot. Wants a second one. Slight from the opponent. This could be... Oh, the throw is wild as well. They're putting pressure on the fielders in the deep. You'd realize the importance of a regular wicket-keeper in situations like this. Akhlaq was scrambling to get back into his position. Look, he didn't read the plot. He's too late. And now he's looking all over the place. Not in position to take that throw. And allows Umair to get in. So that bounce of the square was also quite nasty, but he was not in position. Yeah, he's asking, what do you want me to do? Direct it. Second opportunity. This time Akhlaq is running quickly to the stumps. Just a single. What his point actually is, give me the ball in the gloves or bounce it a little ahead, not a half volley. It's tough for the keeper to grab those. No lack of effort, but it is a specialist's job at the end of the day. This is his 11th match as a keeper. He'll be a specialist by now. He's been keeping for a while in leagues as well. Thing is, you realize if that's your way to get into the team, you work really hard on it and take it up. Again, moves across. There'll be a boundary. Or not. Good stop from Hunain Shah. He's hurt his back while diving, but he is surely saved. 2 runs for the team. 10 gone. It's 90 for 2. Two wickets have fallen, one for Qasim Akram, one for Amir Yameen. Good to see crowd has come in numbers to watch the second semi-final. They were there in the first as well. This is the dive from Hunain Shah, saved 2 runs for the side, and he's hurt his abdomen doing that. Hard surface. So important. We earlier saw Waqas Maqsood diving. And surely find yourself in an awkward position and hurt yourself if you don't time your dive correctly. Correct technique is not applied. Saim is doing a good job. What he's trying to do, run a ball at the moment, is give more strike to Saim Ayub. Umair has rotated strike nicely. You're talking about that dive from Hunain Shah. I'll remember there's a lot of misconception. Shaheen Afridi, who's recovering from an injury, that wasn't caused due to bowling. He got this injury whilst fielding, so fast bowlers got to be really careful. It's a hit and taken. They wanted this. They wanted this so badly. They feel they've got the match back in their grip. Saim Ayub has to walk. Big wicket. A huge wicket. Osama celebrates. The crowd are up on their feet. Saim Ayub, who was looking so good, once couldn't get that timing that he possesses, and you can't keep this man out of the game for too long. Brilliant athlete, Shoaib Malik, covered a lot of ground and make it look ridiculously easy.
Don't take it away from him. What a knock he's played. He's kept Sindh in the battle. 46 of 24. Young man, well played. 91 for 3. Sindh has a soft underbelly. This is their weak part. If they continue to lose wicket, they don't want this run rate to climb up above 10. Look at the ground that Shoaib Malik covers. He knows, and he has to keep the boundary in watch as well. Makes it look easy because he's covered the ground in quick time. Knows the value of this wicket. Look at that. And he's placed himself there, though he's the one who's been talking to the bowlers, but he knows this is a very important position with the leg spinner bowling. At full tilt, he still had enough composure to allow that ball to sit in his hands, absorb the impact on the move. That is a great technique for any youngsters watching. Running catches. Sarfaraz Ahmed, the new batter in. He'll surely keep the field busy with his ones and twos. But what strategy does Sindh have now? Both of them are not big hitters of the ball, so they'll rely on boundaries wherever possible and converting ones into twos. Tire the field out. Just checking at the moment that the batsman cross when the catch was taken. It's all happening. We've seen everything tonight. Yep, they have cross confirmation made. He's been there, done that. A lot of cricket behind him. What's his plan? What's going on inside that cap? Shout given. Sarfaraz has been given out. Sindh is in big trouble now. Double strike by Osama Mir. That sweep shot was on the card. Sarfaraz is never too far away from his favorite stroke. He scored a lot of runs playing that stroke. But today, just failed to make contact. What was the impact? Was it going on to hit the stumps? Umpire Zamir Haider says yes, to the delight of Osama Mir. Sarfaraz walks back without toppling the scorer. Sindh in trouble, 91 for 4. Danish Aziz back in the 11 today in the all-important second semi-final. Comes to strike with Sindh in a spot of bother. 4 down for 91. The run rate is fine. They need someone to stick around and keep that run rate going of 8.5, which has been maintained for a while by the top order. Finishers like Danish Aziz, nights like tonight, are where they earn their money. It's a big stage, and it is all set for him. Come back and make a telling contribution. Those faces will cheer when Danish Aziz gets going. Off the mark. Can he come back for 2? He's not a quick runner, but the throw is bad.
He's not going really pushing hard for the first. Now he realizes second is there. The throw had been top of the bails, probably, yes. See, if you check the two, you got to put your head down and sprint. Thought twice before he committed for the second. Just moves away. What an over this was. Osama Mir, 2 wickets and just 3 runs. Changed the game. 93 for 4. Punen Shah, 18 years of age. Name sounds familiar. He's a younger brother of Naseem Shah. Made his debut in this tournament. 6 wickets. Good average, good economy as well. He's really charged in. Bowled with plenty of heart. Naseem Shah must be watching this, sitting in his hotel room in Karachi. His brother has got pace, and he's been given an opportunity in the second semi-final. First over from him. What a turnaround from Central Punjab. Needed 4 wins to qualify, and they got them. It pitches in line and straightens up. By Zamir Haider, no doubts. It's a long way down. He had to make the call if the impact was on line or in line with the stumps. And he adjudicated in favor of the bowler. No, he didn't get hold of it when the fielder is pretty deep. Irfan Niazi. We're just talking about the journey of Central Punjab, and they were given an equation which was pretty clear. Last 4 games, they have to win them. Then the net run rate comes into play. Then they will qualify. They won them, and not only won them, one of them handsomely. And that is what gave them, or I should say, they earned their position in the semi-final. And now look at them, how they're playing. Scored 179 today. Abdul Razak kept his calm, making sure the boys stick together even after so many losses earlier on in the tournament. And now they are 1 game away. They're pitching outside leg. You're talking about Abdul Razak. Does that expression ever change? When his team was losing, it's exactly the same. And now his team is on a roll. No change of expression whatsoever. Pitched another set of stumps outside the leg stump. Well, he could hold his pose when he hit a big one. He can hold his pose in the dressing room as well when the camera comes on him. He's a guy with a good sense of humor. He can have a good laugh. It's a new thing for him. He mentioned, not now, but a couple of years ago, coaching. He's played that just over his head. We'll get a couple here. And I think he's enjoying the coaching responsibility. I'm talking about a couple of years ago. Met him in the 4-day game. That time was a brand new experience, but I think now he's got a hang of it. And the changing situations in the tournament, which player to be added, who to be left out, what kind of opposition they're facing. He's honest to admit that he has evolved, and it took him a while to grow into this coaching role. Very, very frank and honest guy. The Razak, obviously legend when he played, but
Now breaks a little smile. Probably he knows we're talking about him. Only if he can lip read, because it'll be on mute. It's amazing to see two young men, two fast bowlers, two brothers, one playing for the Star, Pakistan, the other one trying to make his way through, representing the first 11 in the premier domestic tournament, the national T20. Naseem Shah and his brother Hunain Shah. Big moment for him. We've been told there's another one in line as well, a 13-year-old. And he is a quick bowler as well. Oh, good. It's like Kamran, Omar and Adnan. Catch it is the call. Should be out. Should be taken. Yes, it is. Osama doesn't drop them. Hunain Shah is amongst wickets in his very first over. Well done, young man. 98 for 5. Well, teams have worked out where to bowl at Danish Aziz, because this is the length that he struggles with. Steepling bounce, and Osama signaled that he didn't see that ball. He see enough of that to catch it, and Central Punjab on a roll. Are they waiting for the umpire's decision? He's already bowled one in the over. So was that the second bumper of the over? The umpires have to make a call on that. Well, like I said, we have not been short of any drama here in this year's Kingdom Valley National T20 Cup. We've seen everything, and this drama continues right down to the wire. Remember, he cannot bowl one above the shoulder because he's bowled one already. Probably they wants to check the height. No problem here. If it's above the shoulder of the batter, it will be illegal delivery because he's already used the one short pitch delivery. It was climbing, but was it above the shoulder? Make up your own minds. Third umpire will have to make a call, an important call. Danish is a tall lad. Our umpire wants to make sure, because a lot hinges on this decision, because it's important. Danish Aziz is one of the finishers for Sindh. Hold your breath. You're waiting. That's a no ball. It was so close. I think the right decision was made because the ball was climbing. And a free hit. Young Hunain finds out very quickly that this game is a great leveler. A moment of joy and ecstasy.
It's evaporated very, very quickly. Not only it's not out, it's a free hit now. Just love the fact that Shoaib is always around these young bowlers, having a word with them, making sure, telling them it's all good, it's all right. He bowled a good over, and he has indeed. Just 6 runs. He's got to finish it well now, because it's a free hit. It's 99 on board, and it's a right-hander on strike now. This is the delivery. He had been called for 1 for the over earlier. So they ran for a single, which is why Umair is on strike. That's a good ball. A good free hit ball. Single of it. 100 up for Sindh, 100 for 4 after 12. ये थोड़ा सा रिवायत से हटके है कि अपने जो स्ट्राइक बॉलर हैं उनको 6 बॉलर्स को इस्तेमाल करने के बाद लेकर आए। यहाँ कासिम अकरम, हुनैन शाह को सबसे आखिर में बॉलिंग दी गई। खुद इन्होंने आगाज़ किया था। शोएब मलिक और कासिम दोनों ने मिलकर 3 ओवर्स किए और आमिर यमीन के अभी 2 ओवर हैं। वकास मकसूद का तजुर्बा 2 ओवर्स के लिए मज़ीद काम आ सकता है। और ये पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज़ की आमद है। 2 मरहलों में ये दौरा तय होगा। मंगल को कराची में पहला T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। उसके बाद टीमें लाहौर आएंगी। और ये अच्छा शॉट है, सर के ऊपर से खेला और फंबल कर बैठे तैयब ताहिर, जिनके लिए आज अच्छा दिन नहीं गुजरा बैटिंग में और फील्डिंग में। तैयब ताहिर नॉर्मली बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं। उस बार कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार हल्का सा रूम दिया जिसकी वजह से लगा सके। फ्लिक करना चाह रहे थे वापस इन फील्ड में, लेकिन बाउंड्री के बाहर लेके इसको। बॉलिंग कर रहे हैं उसामा मीर। उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की और आजादाना रन्स भी नहीं बनाने दे रहे। इस मैच में 7 विकेटें हासिल की हैं स्पिनर्स ने, जिनमें से 6 लेग स्पिनर ने हासिल की हैं। 4 जाहिद महमूद ने और 2 उसामा मीर ने। फिर जब देखा बैट्समैन बाहर आ रहे हैं, अपनी लेंथ को कम किया, रफ्तार को भी कम किया। टिकटें दस्तियाब हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए। आप भी हिस्सा बन सकते हैं इस तारीखी मौके का। pcb.bookme.pk आप इस वेबसाइट पर जाइए और अपना टिकट बुक कर लीजिए। आप बात कर रहे थे हुनैन शाह की, मेरा ख्याल है उनको लेट लाने का मकसद भी ये था कि जब सऊद और साइम खेल रहे थे तब ज़्यादा रफ्तार ना फराम की जाए, क्योंकि बहुत ही आला टाइमर हैं दोनों। इस वजह से भी थोड़ा रोक के रखा। अब जब दानिश और उमैर हैं, इनके खिलाफ थोड़ा सा पेस ज़्यादा आप लगा सकते हैं पेस बॉलर्स को। ये शानदार शॉट और गेंद गई ऑल द वे। दानिश से ऐसे शॉट्स की हम तवक्को करते हैं, खास तौर पर जब इनकी टीम क्राइसिस में होती है। दिल का स्ट्रोक था ये, आड़े हाथों लिया उसामा मीर को। कदमों का लाजवाब इस्तेमाल, पूरे कंट्रोल में। इस बार थोड़ा तेज गेंद किया था, लेंथ मिल गई थी इन्हें, लाइन को अच्छा कवर किया और थ्रू द लाइन शॉट हिट की। ये देखें लाजवाब कदमों का इस्तेमाल। हेड इनका बहुत स्टेबल रहता है, स्पिनर्स को ये नहीं बख्शते।
इस शॉट के बाद रन बनाने की दरकार औसत 10 से कम हो गई है। बस आगे निकल गए थे और सेंट्रल पंजाब को खबरदार रहना होगा क्योंकि ये बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं। ये मैचेस को फिनिश करना जानते हैं। दानिश 112 पर 4। दोनों टीमों के हामी मौजूद हैं। ये सिंध के सपोर्टर्स लगते हैं। इस पिछले छक्के से पहले थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे थे। अजरक है, मरीना बेहतर बता सकती है। डिजाइन मिलता जुलता है मगर अजरक है नहीं, लग उस तरह का ही रहा है। सात ओवर का खेल बाकी रह गया है। सिंध ने आज पावर प्ले में अच्छा जवाब दिया और 50 से ज़्यादा रन बनाए और उसके बाद भी हालांकि विकेटें गिरती रही। एक मौके पर 20 रन में इनकी 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन फिर भी जो रफ्तार थी रन्स की वो कम नहीं हुई और यही वजह है कि अभी तक सिंध की टीम खेल में मौजूद है। 50-50 किसी सूरत हाल है। रात के वक्त गेंद बेहतर बल्ले पर आती है। हुनैन शाह अब बिलमुकाबिल होंगे उमैर बिन यूसुफ के, जो अब तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेले और स्कूप करने में कामयाब हुए। आला शॉट और गेंद ये शुरू से आखिर तक गई। अंपायर जो हैं ये तौसीक चाहते हैं टीवी अंपायर से कि वाकई क्या ये छक्का था, लेकिन टाइमिंग बड़ी आला गैर मामूली नजर दिखाई उमैर ने। इनोवेशन एट इट बेस्ट, यही कह सकते हैं आप। उमैर ने भांप लिया था कि हुनैन आगे गेंद करेंगे और जिस तरह की पेस दस्तयाब है ये शॉट कैरी करना था ऑल द वे, और मेरा ख्याल है कि कैरी किया है, लेकिन इनोवेशन की दाद देनी पड़ेगी आपको उमैर को। अभी भी ये खेल किसी का भी हो सकता है और इसीलिए आपको शुएब मलिक बहुत इन्वॉल्व नजर आएंगे। हुनैन शाह ने गेंद बुरी नहीं थी, लेकिन जिस तरह का शॉट प्रेजेंट किया उमैर ने वो लाजवाब है। यहाँ ये पवेलियन के सामने की स्कर्टिंग से ऐसा लगता है कि ये पहले गिरी है। यहाँ पर शक का फायदा फील्डिंग टीम को मिल सकता है। टीवी अंपायर खासे मसरूफ रहे हैं। पिछले ओवर में उनको हाइट की नो बॉल पर फैसला करना पड़ा और गेंद उतरी है। हम देख सकते हैं कि ये जो सेसर है, इश्तिहारी सेसर, उससे पहले टिपा पड़ रहा है। लग तो ऐसे ही रहा है इस एंगल से कि ये चौका हो, ऑल द वे नहीं गया, लेकिन ये शॉट बहुत लाजवाब था। अभी भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। ये दोनों खतरनाक खिलाड़ी हैं। दानिश स्पिनर्स को नहीं बख्शते और उमैर इस तरह की इनोवेशन करते हैं फास्ट बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं इस तरह के ओवर्स में। फास्ट बॉलर्स आगे गेंद कराना चाहते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि गेंद जो है ये पहले गिर रही है और अगर ये जाकर सीधी भी लगी, तकरीबन हाफ बॉली पर ही लगी है, तो उस सूरत में भी ये 6 रन देना शायद ये मुश्किल होगा टीवी अंपायर के लिए। जी हाँ, ये 4 रन करार पाए। तारिक रशीद टीवी अंपायर थे, लेकिन मोमेंटम अब शिफ्ट होने लगा है। पिछले ओवर में दानिश अजीज ने शानदार छक्का लगाया। उमैर बिन यूसुफ भी अब बाउंड्रीज में आए तो दूसरा चौका। ज्यादातर रन दौड़कर बनाए उमैर ने आज। और दिलकश, बिल्कुल दौड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, गेंद जमीन से लगी गई। मुसलसल दूसरा चौका उमैर बिन यूसुफ का। शानदार बैटिंग है ये। पिछली गेंद पे चौका हासिल किया था, इनोवेशन, और ये एक टिपिकल ड्राइव। मैंने फिर आगे गेंद करने का फैसला किया और ये देखें अच्छा ट्रांसफर ऑफ वेट किया अगले पांव पे, थ्रू द लाइन ये खेला शॉट। मजा आ रहा है इनको देख के, बहुत ही उम्दा ड्राइव थी। यहाँ ये वो ऐसे शॉट्स होते हैं जो आप दिन भर रात भर बार बार दिल देखने को चाहता है। फील्ड प्लेसमेंट हर गेंद के बाद चेंज होती जा रही है। लॉन्ग
लॉन्ग ऑफ मौजूद है, पहले अंदर सर्कल में था, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, थर्ड मैन को अंदर बुला लिया गया। अब बाउंसर करने की कोशिश की लेकिन गेंद ज्यादा उछली नहीं, स्किड करते हैं। गेंदों और रन्स के दरमियान अब 20 का फर्क रह गया है। सिंध की टीम इस वक्त तकरीबन आगे निकलने के लिए कोशिश है। एक बात तो तय है कि कंटेन करना इस पिच पर मुमकिन नहीं होगा। सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स को विकेटें हासिल करना होंगी, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी दो ऑलराउंडर्स हैं, उनके पास दो अच्छे हिटर मौजूद हैं, अनवर अली जिनको इस तरह की सूरत हाल से निपटना आता है, और साथ साथ आसिफ महमूद भी। सिंध की इस रन चेस की सबसे खास बात यह कि इन्होंने ज़्यादा फर्क आने नहीं दिया रिक्वायर्ड रन रेट में, और जो अभी करंट रन रेट चल रहा है 8.9 की औसत से ये स्कोर कर रहे हैं, और 9 दरकार है। मेंटेन रखा हुआ, जितने भी बल्लेबाज आए हैं उन्होंने अटैक जो है वो छोड़ा नहीं सेंट्रल पंजाब के ऊपर से। ये दोनों जो खिलाड़ी हैं अब तक बड़ी ही दानिशमंदी से खेले हैं, उमर और दानिश दोनों, क्योंकि तेज बॉलिंग करते हैं। यहाँ हुनैन शाह इस थर्ड मैन के फील्डर को फाइन किया गया। यहाँ ऐसा गेंद थी, 2 की कॉल दी और पहुंच गए आमिर यामीन। हर वक्त बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ है, दोनों टीमों में फाइटिंग स्पिरिट नजर आई है। मैच में कई नशेब व फराज आए हैं। सेंट्रल पंजाब की टीम ने बड़ी ऊंची उड़ान भरी थी जब उन्होंने 77 रन पहले 6 ओवर्स में बना दिए थे। फिर सिंध ने आहिस्ता आहिस्ता विकेटें लेना शुरू की। पावर प्ले ख़त्म होने के बाद उनने पहली कामयाबी हासिल की, अखलाक को आउट किया, और फिर एक मौके पर 143 पर 6 खिलाड़ी आउट कर लिए। और आखिरी जो 3 ओवर से उसमें न्याजी ने बैटिंग की, एक बार फिर सेंट्रल पंजाब की टीम जरा सा आगे निकल गई। इस मौके पर कह सकते हैं कि सिंध की नाक आगे इस मुकाबले में, लेकिन ज्यादा नहीं। बहुत अच्छी अप्रोच रही है। शर्जील खान पे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उनकी अर्ली विकेट गिर गई। उसके बाद साइम और सऊद ने जिस तरह अटैक जारी रखा, दानिश और उमैर अब जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और जब पहली गेंद पे या पहली 2 गेंदों पे आपके पास बाउंड्रीज आ जाए तो प्रेशर जो है वो बॉलर के ऊपर चला जाता है, उसे बहुत संभल के बॉलिंग करनी पड़ती है, और बैटर के पास मौका होता है कि इसको कैपिटलाइज कर सकें। मीर हमजा हैं, ये भी अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन, एक मैच जितवा चुके हैं अपनी बैटिंग से। बैटिंग खासी लंबी डेप्थ है इस बैटिंग लाइनअप में। और एक फ़र्क जो हो सकता है दोनों टीमों में कि जो सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स हैं, ये सुहेल खान की तरह इनको रिवर्स स्विंग नहीं मिल रही। ओह, अच्छा हुक शॉट, और गेंद गई इस बार आखिर तक। ये 4 इस ओवर में खासी पिटाई कर दी दानिश और उमैर ने हुनैन शाह की, और इस चौके के साथ 15 रन्स समेटे गए। अच्छी गेंद नहीं थी, लेग स्टंप के बाहर। ये हम जानते हैं कि दानिश को मुश्किल पेश आती है शॉर्ट बॉलिंग पर, लेकिन अगर ये इतनी बाहर होगी विकेटों के तो फिर तो करने वाला 127 पर 4। ज़्यादा फर्क है नहीं इस वक्त 14 ओवरों के बाद। सेंट्रल 130 पे 4 था, और सिंध 3 रन के फर्क पे 127 पे 4 है। लेकिन सिंध के लिए अच्छी खबर ये है कि मोमेंटम उनके पास है। दानिश और उमैर दोनों एक ऐसी सलाहियत वाले बल्लेबाज मौजूद हैं जो किसी भी रिक्वायर्ड रन रेट को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बैटिंग मजीद मौजूद है हट में। सेकंड सेमीफाइनल मुल्तान स्टेडियम में, और आज अच्छा खासा क्राउड यहाँ आया हुआ है। अच्छी क्रिकेट देखने को मिली इन्हें।
8.8 रन ये बाकी मांदा ओवर्स में चाहिए हैं जहाँ तक रन रेट का ताल्लुक है। और उमर मैचेस को फिनिश करना जानते हैं, अच्छा टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया है। दानिश अजीज जो हैं ये अपना कद बड़ा कर लेते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, हालांकि इससे पहले नाकाम रहे थे, टीम से ड्रॉप भी हो गए थे और शायद ये बड़े स्टेज की तलाश में रहते हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं दानिश अजीज कि जब जब ऐसी सूरत हाल हो, जब टीम बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई हो, ये उस मौके में ये उभर कर सामने आते हैं। देखिए पिछले ओवर में ये जिस तरह पिन पड़े लेग स्पिनर पर, वहीं से मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हुआ और ये दिलाशवायश ये वन ऑफ द ये जो है बेहतरीन शॉट था आज के दिन का। बिल्कुल, इससे पहले साइम ने जो छक्का मारा था वो भी कमाल शॉट था। दानिश को हमने पिछले साल भी देखा, एक फिनिशिंग का रोल उन्होंने बखूबी निभाया था सिंध के लिए और अभी भी प्लेटफॉर्म सेट है, एक टेलर मेड सिचुएशन है इनके लिए। इस तरह का आगाज इन्होंने किया है, 8 गेंदों पे इन्होंने 14 रन बना डाले हैं अभी। दानिश अजीज ने PSL में एक इनिंग्स खेली थी 45 रन की 13 गेंदों में। कराची किंग्स के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 346 स्ट्राइक रेट था उस रोज इनका, अच्छी गेंद थी। दूसरे के लिए भी वापस आए, उस वकास मकसूद इनके टीममेट थे कराची किंग्स में, आज इनके सामने बॉलिंग कर रहे हैं दानिश शेख। यहाँ पे सेंट्रल पंजाब को अब जो बॉलिंग की ऑप्शंस हैं उन पर नज़र डालनी पड़ेगी। कासिम अकरम को शोएब मलिक का बहुत अहम किरदार रहा है, वो अक्सर जाके बात करते हैं और ये भी अब कुछ अपने कदमों पे खड़े हो गए हैं। परेशानी यहाँ भी नज़र आनी शुरू हो गई है कि विकेट यहाँ पे लेंगे तो ही कोई बचत है सेंट्रल पंजाब के लिए। स्कोर लेग पर एक खिलाड़ी को रखा गया है, क्या ये बाउंसर करने के लिए जाएंगे? अच्छी डिलीवरी वकास मकसूद की। यहाँ पर अब जिस भी टीम को 102 अच्छे ओवर्स मिल जाएंगे, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। वकास मकसूद के पास तजुर्बा है, रफ्तार कम भी कर लेते हैं, लेंथ में भी कमी बेशी करना जानते हैं। यहाँ पे इन्हें बहुत ध्यान से बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि दानिश आगे की बॉल पे कमिट नहीं करते, खड़े खड़े खेलते हैं। ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जानते हैं कि सिंध अभी लीड पोजीशन में है। ये हाल की हालत में लगते हैं। अच्छा यॉर्कर, दानिश जो है वो खिंची हुई लेंथ को ढूंढते हैं और जो आगे गेंद गिरा हुआ हो उसको खड़े खड़े अपनी कलाइयों के जोर से खेल देते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आगे गेंद इन्हें रखें, फील्ड उस हिसाब से सेट करें, क्योंकि अगर इनकी स्ट्रेंथ पे 1-2 गेंदें कर दी तो ये आपको बासानी छक्के मार लेंगे। खासा वक्त ले रहे हैं इस ओवर में कप्तान कासिम अकरम, और बॉलर भी हर गेंद के बाद वो अपनी फील्ड रीसेट करते हुए नजर आए हैं। यॉर्कर के लिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे रखा गया है, स्लो डिलीवरी के लिए मिड विकेट मौजूद है। फाइन लेग थर्ड मैन दोनों फील्डर आगे हैं। यॉर्कर का ही इंतखाब किया, ये इनका बड़ा हथियार है यॉर्कर वकास मकसूद का। T20 ही ऐसा खेल है जिसमें इन्होंने खुद को ज्यादा मनवाया है। एक T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खेले भी थे। दानिश को स्पेशली यहीं पे बॉल कराना पड़ेगा यॉर्कर लेंथ पे, तभी बचत है। लेकिन उसके बरक्स उमैर जो हैं वो फ्रंट फुट पे बहुत अच्छी ड्राइव्स मार लेते हैं, तो थोड़ी सी हिकमत अमली यहाँ पे बदलनी पड़ेगी। बाउंड्री अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी तक नहीं दी, लेकिन आखिरी गेंद है, उस पर कोशिश होगी उमैर की कि बाउंड्री हासिल कर लें। यहाँ क्योंकि यॉर्कर कर रहे हैं तो पिछले ओवर में ये स्वीप शॉट खेल चुके हैं हुनैन शाह के खिलाफ, और फाइन लेग को उसी गरज से पीछे बाउंड्री पर भेज दिया गया। चिप किया लेकिन एक से ज्यादा नहीं बन सकेगा, बिल्कुल खामोश रखा दोनों ही खिलाड़ियों को इस ओवर में वकास मकसूद ने। सेंट्रल पंजाब की टीम फाइट करती हुई नजर आई। 4 विकेट पर 132 सिंध।
सेंट्रल पंजाब को विकेटों की तलाश है। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अगर आप देखें, कास मकसूद के पास 1 ओवर है, अहमद दानियाल के 2 मौजूद हैं, शाम अमीर का 1 है, हुनैन के 2 मौजूद हैं, आमिर यामीन भी 2। अब यहाँ पे किस तरह सेंट्रल पंजाब रोटेट करेगा ये बहुत मैटर करता है। तो फिलहाल इन्हें विकेटों की तलाश है। अहमद दानियाल को ज़रूर दिया जा सकता है 1 ओवर। हुनैन शाह थोड़े एक्सपेंसिव साबित हुए। अहमद जिस तरह की पेस इनके पास होती है, ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं बैटर्स को। या वकास मकसूद 1 ओवर करेंगे, अहमद दानियाल जो हैं ये 2 ओवर्स करेंगे, और जो बाकी के 2 ओवर्स हैं उनके लिए हुनैन शाह का इस्तेमाल किया जाएगा। आमिर यामीन से पिछले मैच में आखिरी ओवर कराया गया था, उनके भी अभी 2 ओवर्स बाकी हैं। ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं, क्योंकि 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया था, और शुएब मलिक और खुद कासिम अकरम ने जो 3 ओवर्स किए, उसकी वजह से ये आसान हो गया कप्तान के लिए काम। सोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन एक अच्छा कमांडर किस फौजी को कहाँ लगाता है, ये बाजी मारने वाली बात होती है। जी बिल्कुल, वजह कहा। ओ अच्छा कट शॉट, ये 4 उमर बिन यूसुफ, ये दबाव में वो गरज दिखा रहे हैं, मुराद दिखा रहे हैं, और बड़ी आला बैटिंग इन्होंने की है। इनकी कोशिश यही होती है कि पहली या दूसरी गेंद पे बाउंड्री लाजमी हासिल कर ली जाए। इस बार मदद ज़रूर की दानियाल ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप नहीं था, लेकिन लेंथ और थोड़ी सी विड्थ मिली जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और ये अच्छी बॉलिंग नहीं है, फील्ड के हिसाब से इन्हें स्टंप्स को अटैक करना पड़ेगा। अहमद दानियाल सेंट्रल पंजाब के सबसे कामयाब बॉलर्स में से एक हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि उमर बिन यूसुफ जो हैं ये रफ्तार से ज़्यादा ये मरूब नहीं होते, ये अच्छा खेलते हैं पेस बॉलिंग को। और यहाँ दूसरा रन बन जाएगा मिस फील्डिंग पर। दबाव महसूस कर रही है इस वक्त सेंट्रल पंजाब इस मैदान पर। इरफान नियाजी मौजूद थे लॉन्ग ऑन पे, लेकिन 2 रोकने में कामयाब नहीं हुए। बहुत ही तेजी से पलटे थे उमर दानिश, और अच्छी रनिंग, प्रेशर डाल दिया है। पहली 2 गेंदों पे 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं, और ये ओवर जो है मोमेंटम सेट कर देगा सिंध के लिए या सेंट्रल पंजाब के लिए। ये 9 रन की इस वक्त औसत है, मौजूदा औसत, दरकार औसत भी एग्जैक्टली 9 रन की है। यहीं से ये खेल शुरू हुआ था, ये इनिंग्स सिंध की। अच्छी डिलीवरी थी, रफ्तार कम की, दूसरा रन नहीं बन सकेगा। उमर बिन यूसुफ और दानिश को इस इनिंग्स को सही अंजाम तक पहुंचाना है, जिसकी बड़ी ही उम्दा और बड़ी गहरी बुनियाद उठाई थी साइम अयूब ने। उनके नाम के आज डंके पिट गए। साइम अयूब के कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो भी फूले नहीं समा रहे होंगे आज, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने कर दी है इस बड़े मैच में। बहुत इवॉल्व किया उन्होंने, अपने स्किल्स पे काम किया, टेम्परामेंट पे काम किया है। मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं भी उनकी एक बड़े मद्दाओं में शामिल हो गई हूँ। इस तरह के क्लासिक शॉट्स मारते हैं वो। यहाँ क्योंकि आपको बहुत खुशी होती है जो पौधा आप लगाते हैं, जब वो पनपता है और कद निकालना शुरू करता है। ये लेग साइड की फील्ड है दानिश के लिए, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद हैं। फाइन लेग को आगे लाया गया, या ये बाउंसर करने के लिए जाएंगे। सबसे बड़ा मसला सेंट्रल पंजाब के लिए यही आ रहा है कि पिछले कुछ ओवर से पहली या दूसरी गेंद पे बाउंड्री हासिल हो जाती है, उसके बाद बैटर्स बहुत आसानी से सिंगल रोटेट करने में कामयाब होते हैं, और वो सिंगल जो है वो चुभना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहला गेंद अपनी जगह पे लाजमी करें, और आखिरी भी। बड़ा ही लाजवाब क्रिकेट मैच रहा है। आसाब शिकन और तमाशाई पल पल से महसूस हुए हैं। बिल्कुल आप आंख नहीं झपक सकते इस मुकाबले से। बैक ऑफ द हैंड, स्लो डिलीवरी, खाली जगह पर खेला, दूसरे रन का मौका दिया नहीं। शुएब मलिक बहुत पेश रहे हैं आउटफील्ड में।
ना सिर्फ आउटफील्ड में बॉलर से ज़रूर बात कर रहे हैं, एक प्लान उनके साथ मिलकर बना रहे हैं कि किस तरीके से सिंध की विकेटें हासिल की जाएं। बहुत ही अहम किरदार रहा है इनका इस पूरे टूर्नामेंट में। आसिम अकरम के साथ चाहे वो बैटिंग हो या कैप्टनसी हो, इन्होंने अपना इनपुट और एक्सपीरियंस दिया है उन्हें। मिड ऑफ के ऊपर से क्या ये हिट कर सकते हैं? अगर यॉक करने के लिए जाते हैं और लेग साइड में स्विंग किया, गेंद खाली जगह पर की और जल्दी करनी पड़ेगी लेकिन पहुंच जाएंगे। दानिश अजीज, सिंध की टीम इस ओवर में 11 रन्स बनाने में कामयाब रही। 37 रन 24 गेंदों में सिंध इस वक्त फेवरेट लग रहा है, 143 पर 4। That's a beautiful view of Multan Cricket Stadium, and equally beautiful chase by this Sindh side. Umair bin Yusuf and Danish Aziz, they're making sure that they see the Sindh side home. They've been very sensible. Game awareness, everything in this partnership. It's 143 at the moment. The partnership is at 52 and that has come at good time, 32 deliveries. And now the last 4 overs, the run rate required is 9.25. Waqas Maqsood. That's well fielded in the end. That is a good stop. Ahmed Daniel there. Shah Faisal alongside me. Very sensible chase, you would say. Indeed. I have a feeling we're heading for yet another thriller. At the moment, Sindh are in control. We've seen so many times in this tournament, teams don't give up. They find a way to come back. And a wicket to 2 here could really set the panic buttons in the Sindh changing room. Partnership is the key. Wanted to swing out. Is that out? Is that out? He's appealing. Yes, he's given him out. That is a huge wicket in the context of the game. Danish Aziz looks stunned, looks shocked at the decision, but the umpire Zamir Haider has decided that that is out. It was such a huge appeal. Still not happy. Your thoughts on that? Did you hear anything? Turned on the stump mic volume on full. It missed by a mile. It looked like it. I don't know. I can't say much. He's the decider. He's the man in charge. He's given him out. He's not happy though. 20 vital runs for his team, Danish Aziz. It's 143 for 5. Big hitting Anwar Ali in the middle. The 37 run required. Now, one of the most talented all-round cricketer, I must say. This is the last wicket. Danish is wanted to swing it hard. Just been given out by Zamir Haider. Look at the reaction from Waqas. He was convinced. Clark joined in late. Had to look around over their shoulders to see what Zamir Haider was saying. And they saw the finger go up.
37 to win. 21 deliveries to get those runs. It has all come down to Anwar Ali. Very experienced. Strike rate is the most impressive part. Best of 65. Waqas Maqsood. He's bowled beautifully. No doubt about that. Real-time replay. Samir Haider took a long time before he raised the finger. Yeah, the appeal was great. But nevertheless, move on. It's gone. It's happened. 143 for 5 is Sindh. 37 more. 20 deliveries. Qasim Akram tension. Why not? It's a big game. It's the semi-final. Nicely done, but there's a fielder. One taken. There's a chance for another one. In fact, more than that. Yes, one more. Shoaib Malik. You don't get to see that quite often. Nice field by Shoaib Malik. Look at that, went straight. Tayyib Tahir, normally very good fieldsman, and the backup Shoaib Malik just gave away one more run, and that's what he's saying. What are you doing? There is no need. He gave it his all. He really put everything into that throw. Even Shoaib Malik, who was rushing in, misjudged it. A couple of runs. Just 3 of the over. Third inside the circles, fine leg inside the circles. There's a fielder D square leg, deep mid wicket. Anwar Ali down the track. It's gone through. Much needed boundary. Only 3 runs came, and this boundary is very vital at a very right time for Anwar Ali and Sindh. He's advancing to meet the ball on the pole. Just squeezed it out. Look at that. A little bit of shape away allowed him to throw the arms at it, and it squirted it away, found the gap. Much needed boundary. Sindh, and he lost the wicket of Danish Aziz. Really needed that boundary. Yeah, that has been the beauty of this chase. They've taken boundary every over. In rest, they've taken singles and twos. Very sensible way of going about the chase. They're not looking happy. Tension. Chance! Oh, missed it. Whoa, everything happening. Although they took 1 run, but it was a very risky call. Umair bin Yusuf, very lucky. 17 gone, 150 for 5. Central Punjab camp, as much tension. This is an absolute thriller once again. We've had so many of them. That's what the options that they're left with. Qasim Akram, the skipper of Central Punjab. Plenty of options. Yeah, I believe it's going to be Amir Yamin and Ahmed Danial to bowl these last 3 overs, because Amir has 2, Danial has 1. I don't think so. He will go with an inexperienced Sunain Shah. Although he has pace, but that inexperience in him, you might not see him. The equation, if you look at it, the modern day way the batters think, the equation is simple for Sindh. They need a boundary in every over from here. If they get that, a boundary 4 and 6, I think they've got a good chance to get that 30. Amir Yamin it is. Rightly so. He's the most experienced one. And you need the most experienced man at this time, because it is going down to the wire. 30 of 18. Anwar Ali to face. Straight. Very good hit, but there is fielder. There is Shoaib Malik. He will only be 1. Shoaib Malik patrolling the hot spot down the ground. Amir Yamin so far has bowled well in the death. Look at Umair bin Yusuf. That dive, and look how quickly he got up. He was out. He's very athletic. Look at that.
How well has he played? 42 of 31. At a time when the team needed it the most, he has delivered. And that is the quality of a good batter. When team needs it, you deliver. 29 of 17. Amir Yamin, what can he do? Nicely driven. Just one, just one. This is good bowling. This is really good bowling by Amir Yamin. Remember, it was the same over, the 18th over by Mir Hamza that gave away 22 runs. Can the role be reversed for Amir Yamin? Can he hold it up here? I was just mentioning, Amir Yamin has improved his death bowling skills in this tournament. He's bowled at death quite regularly, and he's done it with good success. Good atmosphere inside the ground. Decent crowd on a Super Sunday. Look at the tension. They're not moving. Nobody's moving. Good ball again. Very clever. That is experience for you. That is why he has kept his 2 overs for the death overs. That is brilliant. Into the pitch. Just rolled his fingers. Little off break, off cutter. Never arrived for Anwar Ali. Slow in pace too. He wanted him to make a mistake. It's a great over. Just 2 runs of 3 deliveries. Anwar Ali needs to go big here. Needs a boundary. Where can he get? What are the areas? That is again a beautiful delivery. Wonderful spell. That is a top over. Under this high pressure game, high pressure situation, he is delivering. So far so good from Amir Yamin. Mixing it up nicely. This time went for the in-swinging Yorker. Wide of the crease, angling in. No length for Anwar Ali to work. This is terrific cricket. The skills that we've seen in this tournament is really incredible. Very, very heartening to see. Got to finish well, Amir Yamin. You bowled a beautiful over, just need to finish it well. On the other hand, it's Umair bin Yusuf, needs a boundary. Where can he found one? Oh, that's nicely went. There is Fielder, one more run. That is excellent. That is top stuff by Amir Yamin. Oh, what the Central Punjab fielders are saying to Amir Yamin. Let the ball hit the stumps. He got between the stumps and the ball. Umair was short because he was on the back foot when he played the stroke. Amir Yamin was looking to stop the ball and he was in front of the stumps. Oh, that could have been curtains. Was it hitting? Maybe. It's up to Anwar Ali now. You've got to find a boundary here. 26 of 13. It's getting tougher and tougher for Sindh at the moment. One blow will make him catch up with the run rate despite a sensational over from Amir Yamin. He's got to finish well. Well bowled, really well bowled. That Yorker, all 6 deliveries, they've been right on the spot where it is needed. That is an excellent over under this pressure situation by Amir Yamin. That is experience for you. 18 gone, it's 155 for 5. Just love the energy from the crowd. Wonderful. Sultan, you've been great. You've been excellent. You've come in numbers. You've enjoyed the game. You've been loud. The players, I'm sure, definitely have enjoyed this crowd too, as long as we have. Oh, definitely. Does give you a different vibe when the spectators turn up in a domestic event. It's really lighten up the evening here at the Multan Cricket Stadium. Plenty of Shoaib Malik fans. He's got fans everywhere. He's a global superstar, no doubt about that. And his contribution to Central Punjab in this tournament have been great. And I'm sure Qasim Akram would have learned a lot
with him. And Ahmed Daniel, as was expected, that he will bowl that second last over. Right, the equation is 25 of 12. Well, they didn't hit the boundary that's required in every over, so now 2 boundaries probably in this over to leave them with good enough total in the last over. Anwar Ali can do it. The game is very much on. Third man, fine leg up in the ring. That's picked up nicely through the gap. That is a boundary that was much needed by Anwar Ali, and getting it on the very first delivery of this over. Game on. Pressure back on Central Punjab. Look at how low Anwar Ali remains. A low full toss, just a flick of the wrist. But look at the base. It's very, very still. Looking to launch in any direction. This was too straight from Ahmed Daniel, for once missing his Yorker length. And Anwar Ali in punishing mood. Excellent start to the over. That tension, look at Amaya Farad, Mansoor Amjad, Abdul Razak, everyone tense, because this is the big game. This is the semi-final of Kingdom Valley National T20 Cup. The winner will play Khyber Pakhtunkhwa tomorrow. Oh, that's in the air. Is it far enough? Is it long enough? Yes, it is! And 6 for Anwar Ali. What a wonderful hit. And look at that bench for Sindh. Worth in goal, these finishers. He's brought the equation back to parity with just 2 deliveries. Ahmed Daniel once again missing his length in the slot. Anwar Ali dismissive. Wow, what a shot, what a hit. Look at Shoaib Malik. What is he saying? Listen to me, maybe. I'm telling you the right thing, because I'm the experienced one. I've been into these situations many times. Maybe look to ball that slower one. What is the discussion? What can they do? 2 blows. All it took for the pressure to completely shift onto Central Punjab. This has been such kind of game. Well, this has been such kind of a tournament. The game have been twisting and turning within blink of an eye. And this semi-final is no different. Ahmed Daniel is bowled beautiful in this tournament. Anwar Ali, it's a 6. It is a 6. Yes, it is. What a wonderful hit again by Anwar Ali. He's doing it with quite some ease. Length ball, and he's absolutely smoked it. Anwar Ali, he picked it from the hand, and he was ready and waiting. Picked the bones out of that, Ahmed Daniel. That was a slower one. Beautifully done by Anwar Ali. That is why I say he's the most talented all-round cricketer in Pakistan. He's ready to hit another one. Look at those eyes. Look at that frustration. 3 deliveries, 9 of 9. Run a ball. How long did it take to change the equation? Sindh has never qualified in a final of National T20 Cup. This is a huge opportunity. Just 9 runs away. Look at those faces. They tell a story which is not good. You have to say that throughout the game, the rub of the green didn't go Sindh's way, but they had the character to come back fighting. Look at that. They're expectant. Ahmed Daniel has bowled so well, but it has come down to this over, this important over. Anwar Ali, sensible, very good cricket. There's no need for extra hitting. You can do it in singles. 3 balls change the equation within blink of an eye. Anwar Ali, the finisher. He's had a quiet tournament, but he's come to the party when it mattered the most. This one, the best of the lot, and it went. Eight of 8 now. Mahir bin Yusuf has played a vital inning.
You got to give credit to Umair bin Yusuf. He's kept his calm. He's played the ball along the ground, mostly conventional play. He's kept the scoreboard rolling. One. Easily done. Good cricket. Oh, don't get another one. Don't give another one, rather. Wow, look at the clock. It's all happening. Entertainment and drama at its very best. "18 runs off this over. The over that was supposed to be the most important one of Mohammad Daniel's career is given away. 18 runs and 1 ball still to go. He's up against Anwar Ali. A little cameo, 26 off 12. Last delivery. 6. That is 6. Wonderful hit. That is into the crowd. Anwar Ali has done it for Sindh. What an excellent shot that is. They're just 1 run away now. Look at that. These are great scenes. Anwar Ali settled the deal within 1 over. This has been amazing. Sindh, Ghulam Ali, the coach, his first time of asking, and Sindh on the verge of getting into the final. As if he was expecting this one. He was ready for this. Look at that. Yep, he was all set for this shot. This means a lot. This means the world to Anwar Ali. Look at those expressions. He's just loving it. And the Sindh team as well. Wow. This was a huge over. Sindh has never reached the final of National T20 Cup. And the scores are level. 6 deliveries to go. What a performance. What a game. Score is level. 1 run. It's going to be Usama Mir to bowl that last 6 deliveries. Just 1 required. They're a happy bunch. Why not? They've done an excellent job. It was a huge target to chase. They've done it. They've done it with some ease. Just 1 more run. Get some chalk. It was off the cue end. Umair bin Yusuf, Sindh dug out. The players have jumped onto the outfield already. That's it. He's done it with a 6. That is a top-class inning by Umair bin Yusuf, hitting the 6 to take his side to the final of the National T20 Cup. And that will bring... Look at the scenes of ecstasy and joy and delight. 2 overs ago, they felt they were down, but they were not quite out because Anwar Ali was there, and he's the finisher. He came good. And look at the crowds. What a game of cricket we've had here at the Multan Cricket Stadium. And look at the Sindh camp. Wow. Yeah, the celebration shows what this means to Sindh side. A new look Sindh side, new captain. They made changes and they have delivered. Look at Anwar Ali. He's been the hero of this game. At a point they were struggling. They needed a heroic effort and he has delivered. On the other hand, they're a disappointed person. Abdul Razak on your screen. They played so well. They made a comeback in this National T20, but these runs were not enough. And Sindh has won it by 5 wickets. Great scenes. What wonderful scenes. Spare a moment for Central Punjab and Abdul Razak. But we'll do that later. This moment belongs to Sindh, and Umair bin Yusuf proved to be the match winner with his stunning blow. Field was up, but he didn't care a bit. Look at the celebrations. Wonderful scenes. This is what we'll live for. Sarfraz, for a change, is smiling. He was also quiet a couple of nights ago. He's not tonight. It was a great game of cricket. Central Punjab played their part, but Sindh, the deserved winners, they were the better side on the night. Absolutely. No team has ever chased down 185 in a semi-final of National T20 Cup. And look at Saim Ayub. It was his start that gave that momentum to Sindh side. And in the end, it was Anwar Ali. It's a heroic effort, winning the semi-final for Sindh. Look at Sindh celebrate. I saw Saim Ayub, he didn't take his pads off.
It's been quite some time since he got out. But this Sindh side, under Ghulam Ali and Saud Shakil, have been a revelation. They have thrilled, they have entertained, they have Anwar Ali, Asif Mahmood. Good mix of youth and experience. Very good. Crowd has been entertained. This is what they were here for, a good game of cricket. And they've been entertained thoroughly by this man on your screen, Anwar Ali. He was not included in the match in the previous game. He was hurt, but this is the way to make a comeback. Make your bat talk. Wonderful inning. Just waving at the crowd who came in numbers in the Fazal Mahmood enclosure, giving thanks to them. What a game of cricket. Well, we all need to catch some breath here. It has been non-stop action. Look at that batting card. Saim Ayub at his elegance best. 46. Saud Shakil was looking good. Umair bin Yusuf really proved to be the glue in the middle order. Allowed the big hitters to come and express. Danish Aziz flourished briefly, but Anwar Ali's innings was the game changer. It has been a hard work for central bowlers. Look at the economy. 12 from Ahmed Danial, who's been their best bowler. And then 10 of Hunain Shah. These two fast bowlers were really punished. 2 wickets for Usama Amir, 1 for Waqas, 1 for Amir, and 1 for the skipper, Qasim Akram. The effort was not enough as Sindh won this game by 5 wickets. Yeah, definitely. Congratulations to Sindh side. They've qualified for this final for the very first time, and this is how it all began. They needed to chase down 185 runs, and they did it in some style. Shajil Khan started off nicely, some luck going his way. This partnership, I tell you, and this was a peach of a delivery by Amir Yamin. He swings the ball in and got the big wicket, and then this big partnership from Saud Shakil and Saim Ayub, and how well Saim Ayub has played. Very classical. He was given an opportunity by Faizan, but then after that he never looked back. That was the shot of the tournament, I would say. This one picked up nicely, and then after that he never looked back. He was just so brutal to this central Punjab bowlers. They had no answer to his classical and innovative batting. He played all around and was well supported by the captain Saud Shakil. Look at that, that pick-up shot. He reminded us all of Saeed Anwar. That's inside out by Saud Shakil. He made sure that he stayed there with Saim Ayub to get such shots out of him. And then this one slower in pace, Qasim Akram getting the wicket off the captain. Saim Ayub kept on hitting his runs. It was very impressive. Then Shoaib Malik had to run long way to get his wicket. This was Sarfraz Ahmed. Not the sort of decision that he would like to see again. Then Danish Aziz came, and this was the lucky part. Umair bin Yusuf kept the chase, kept Sindh in hunt. Really innovative batting. Umair ran between the wickets very, very well as well. Classical batting. He's a red ball opener, so he knows all about pace. Look at that glorious cut shot. Danish Aziz was given his marching orders by Zamir Haider. But then Anwar Ali arrived. And who would have known at this stage that he would turn the game on its head within 6 deliveries of Ahmed Danial. This is the over where it was all carnage and the wheels came off for Central Punjab. Telling blow. And this was the moment which sealed Sindh's position in the final for the very first time in the National T20 Cup. The celebrations began. I just love these young boys, the bunch of Sindh youngsters. They brought so much energy into this Sindh side. And let's have a look at the match summary. Central winning the toss and batting first, 179. They could all manage. Faizan looked really good for his 52. Clark supported him with his 28. Zahid Mahmood was probably the bowler that took the game away from Central Punjab, took 4 wickets.
And in reply, it was Umair bin Yusuf's 51, Saim Ayoub's 46, and heroics of Anwar Ali in the end, seeing that Sindh made sure that they have a place in final, winning it by 5 wickets. We're going to take a short break. When we come back, we'll have presentation ready for you. Hello and welcome to the post-match presentation of the second semi-final. After 32 matches and 16 double-headers, we finally have our finalists. It will be KP versus Sindh tomorrow, right here at the Multan Cricket Stadium. And what a semi-final we've had between Central Punjab and Sindh today.
The match was won by Sindh by 5 wickets, but no one knew till the second last over who was going to take that second berth in the final. And eventually, Saud Shakil and his men held their nerves and a brilliant performance. Before we announce the player of the match and of course speak to the captains, I'll welcome our guest starting from my left, Dr. Mohammad Abdul Sabur, CEO Southern Punjab Cricket Association. Thank you for joining us. And along with him, Mr. Ghulam Hussain Shahid. He is Chairman, Kingdom Valley. Welcome to you as well. After a careful thought, the Kingdom Valley player of the match is once again a joint player of the match. And it goes to Umair bin Yusuf and Zahid Mahmood, both of them in their own departments. Brilliant performance. I request them to come forward and take the check from Mr. Ghulam Hussain Shahid, who is Chairman, Kingdom Valley. 4 overs, 4 wickets and 20 for Zahid Mahmood, and Umair bin Yusuf, 51 not out of 36. 4 boundaries and a 6. Brilliant performance. They received the check, and then Mr. Mohammad Abdul Sabur will hand over the trophy to the 2 Kingdom Valley player of the match. Once again, Zahid Mahmood and Umair bin Yusuf. You just can take the trophy now from Mr. Mohammad Abdul Sabur. He is the CEO Southern Punjab Cricket Association. We'll have a quick word with both of you. We'll start with Zahid. Zahid, जब बॉलिंग चल रही थी और आपकी बारी आई तो काफ़ी धुआंधार बैटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर्स की पिटाई हो रही थी. क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनाई थी? ऑब्वियसली स्लो करना था गेम को, लेकिन कोई पर्टिकुलर टेक्निक की हिट्स रुके? जी, जब मेरी बॉलिंग आई थी तो इस वक्त यही था माइंड में, एक बड़ा मैच है इस वक्त, टीम को ज़रूरत भी थी मेरी, तो मेरी कोशिश यही थी कि यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू दूँ टीम को, ताकि ये अगर ब्रेक थ्रू दूंगा तो रन्स भी रुकेंगे. और उसमें अल्लाह का शुक्र है मैं पहले ओवर में कामयाब हुआ. उसके बाद मैंने अपनी जो लाइन लेंथ पे बॉलिंग थी वो करता रहा, उसमें मुझे विकेटें मिलती रही. कितना एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पहले आपके साथ अबरार थे तो स्पिन डुओ था, एक शेयर करते थे लोड, अब स्पिन डिपार्टमेंट पे अकेले पे आप पे लोड था. जी, अब मेरी जो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थोड़ी बढ़ गई थी, मुझे जो फील हुआ था, लेकिन मैं अपनी बॉलिंग कर रहा था और मेरा जहन यही था कि मैं डॉट बॉलिंग करूं ज़्यादा से ज़्यादा और कहीं पे ब्रेक थ्रू दिलाऊं जो जहां टीम को ज़रूरत हो. ऐसी सिचुएशन में एज अ प्रोफेशनल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब बहुत बड़ी बड़ी हिट्स लग रही हो, पिच भी अच्छा हो, तो एज अ स्पिनर आप क्या कोशिश करते हैं? दूर रखते हैं बैट स्विंग से बॉल को, या कोशिश करते हैं विकेटों में ही कराऊं? जी देखें, स्टम्प टू स्टम्प बॉल करना बेहतर रहता है और थोड़ा सा बॉल खिंचे हुए करना लाजमी होता है, और वेरिएशन से होता है, स्लो तेज़ एक पेस से नहीं कर सकते फिर आप. चलिए, आज की शानदार परफॉर्मेंस हुई और अब एक और बाकी है. अच्छा, जी, लास्ट में भी ये थोड़ा कहना चाहूँगा कि इस वक्त मेरे डिस्ट्रिक्ट दादू में सैलाब आया हुआ है, तो ये मैं मैन ऑफ द मैच जो है उनको डेडिकेट करता हूँ. चलिए, बहुत बड़ी बात. थैंक यू सो मच. मैं बात करना चाहूँगा उमैर बिन यूसुफ से, जो कि शेयर्ड प्लेयर ऑफ द मैच हैं. उमैर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि आप लोगों ने चेस स्टार्ट कर दिया था, 8.5-9 की एवरेज से जा रहे थे, इसको आते ही मेंटेन करना ज़रा टफ होगा. जी, मेरी कोशिश, हमारा प्लान बस सिंपल यही था कि क्योंकि आउट हो चुके थे तो मेरा जो रोल है वहाँ पे यही है कि ना एंकर रोल अप्लाई जाए और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक किया जाए, और जब बाउंड्री का मौका मिले बाउंड्री मारते हैं, तो मेरा प्लान यही था, तो उस पर मैंने एग्जीक्यूट किया और हम कामयाब हुए. अच्छा, खासी स्मार्टली आपने इनिंग्स को पेश किया. जब साइम मार रहे थे तो आप रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन जब वो गए तो आप सीनियर मेंबर बन गए पार्टनरशिप. जी, क्योंकि रन जैसा रिक्वायरमेंट थी वो 9 पर ओवर की थी, तो मेरी कोशिश यही थी कि क्योंकि अभी साइम बाउंड्री मार रहे थे तो अब मेरा रोल आता, तो मैंने कोशिश की कि बाउंड्री लेता रहूँ और 9 पर ओवर का बरकरार रखूँ, तो यही हम प्लान किया था. कितना टफ होता है प्लेयर के लिए इन एंड आउट हो 11 से और आते ही वापस ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ जाए? जी, इन एंड आउट की ये वजह थी कि मैं बीच में बीमार भी हो गया था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं सेमीफाइनल खेलूंगा और अपनी टीम को एंड तक थ्रू लेके जाऊंगा, और मैंने आज यही किया. उम्मीद करते हैं आपका कॉन्फिडेंस अब फाइनल में कैरी फॉरवर्ड होगा. इंशाल्लाह. चलिए, वेल प्लेड. थैंक यू. Umair bin Yusuf and Zahid Mahmood, the Kingdom Valley player of the match today. Now I'd like to call upon Qasim Akram, the captain of Central Punjab. We'll have a quick word with him. कासिम, टीम की परफॉर्मेंस से हम जहां बैठे हैं कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अच्छी फाइट दी, एक ओवर ख़राब हुआ एंड में जिसकी वजह से फाइनल की पोजीशन चली गई, लेकिन ओवरऑल इस मैच को कैसा देखते हैं? जी देखें, मेरे ख्याल में हमने 15 से 20 रन जो है ना कम किए हैं. अगर वो कर लेते तो मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाना था. आपका प्लान क्या था जब आप बैटिंग के लिए आए थे, जब आपको ऐसा स्टार्ट मिल गया था पावर प्ले में, फिर आपने अपने क्या मैसेज भेजा था कि 200 टारगेट करना है, 190 करना है? जी, प्लानिंग यही थी कि जिस तरह का स्टार्ट मिला था तो यही था कि 190 प्लस करें. तो जिस तरह हमारी विकेट्स गिरी तो उस तरह नहीं हो पाया, लेकिन नीचे से इरफान ने अच्छा खेल गया था, जो अच्छा टारगेट था, बट बॉलिंग उस तरह इतनी अच्छी नहीं हो पाई मिडल ओवर में. ओवरऑल आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे एज ए फील्डिंग कैप्टन कि वो विकेट्स तो गिर रही थी लेकिन 9 का मेंटेन कर रहे थे रन रेट. जी बिल्कुल, ऐसे ही है. वो जो विकेट्स गिरी हैं लेकिन उन्होंने अपना स्ट्राइक रोटेशन करते रहे हैं.
ओवरऑल अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस इस नेशनल T20 में देखी जाए तो काबिल जिक्र होगा इस बात का कि आपको 4 में से 4 जीतने थे क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल्स के लिए, और आप लोगों ने रेयर एंड ऑफ द टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त फाइट दी। जी बिल्कुल, सेकंड लेग में हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और बड़े अच्छे मैच जीते हैं। सो आज थोड़ा बैड डे था। You're a young captain. We wish you best of luck and love the way you led the side, and more power to you. Thank you. Qasim Akram, the captain of Central Punjab. Call upon the winning captain, Saud Shakil, who is also the finalist, the second finalist. Saud, आप शुरू से चेज के हामी रहे हैं। यहाँ पे जब पहली इनिंग्स में 180 का टारगेट आपको मिला तो आपने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा हो गए, आप हैप्पी थे कि पुल बैक हो गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जिस तरह का उनका स्टार्ट हुआ था उसके बाद जिस तरह हमने उनको पकड़ा हुआ 180 पे, तो हम लोग बहुत श्योर थे कि हमने बहुत अच्छा पकड़ा और हम इसको इजीली चेस कर लेंगे। किस तरह से मैनेज करते हैं एज ए कैप्टन? जो आपने देखा पावर प्ले में करीबन 77 हो गए, हाईएस्ट था पावर प्ले, किस तरह से लड़कों को काम रखने के वापस आ सकते हैं, और आप एक स्पिनर शॉट थे? बस कोशिश यही कर रहा था कि जिस तरह वो अच्छा खेल रहे थे पावर प्ले, मुझे ये था कि मैं जो जाहिद भाई पे पूरा बिलीव था कि जब भी मैं उनको लेकर आऊँगा और वो मुझे विकेट लेके देंगे, तो वही हम प्लान कर रहे थे उस टाइम पे कि अगर हम विकेट लेते रहेंगे तो हम उनको 200 के अंदर पकड़ लेंगे, और इन दी एंड वही हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोमेंटम आपको ऐसा मिला है फाइनल के लिए कि आपके लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन्स करके दिए हैं आपको, तो आपके अब थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ गया होगा, पीछे भी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, अगर आप शुरू से देखें तो हमारा एक प्रोसेस था, हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। मुझे कभी भी उन पर डाउट नहीं था, उनकी एबिलिटीज़ पर डाउट नहीं था, और जिस तरह उन्होंने आज अनवर भाई ने फिनिश किया, उमैर यूसुफ जिस तरह खेला, ऊपर से साइम जिस तरह खेला, तो मुझे किसी की भी एबिलिटी पे कभी भी वो डाउट नहीं था। हम एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे थे और हमने उसको पूरा करने की कोशिश की है। सेमीफाइनल की ज़बरदस्त जीत है, इसकी जीत को सिंक इन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन फ़ौरन ही फाइनल आ रहा है कल। बिल्कुल तैयार है केपी एज ए ओपोनेंट, आपको बिल्कुल पता होगा। ये जो आपने आज 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर की स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्या इसी से जाना चाहेंगे? प्लान्स नहीं पूछ रहा, लेकिन इससे सेटिस्फाइड है? मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो कल ही डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद यही प्लान हो मेरा। चलिए, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल। थैंक यू वेरी मच। So Shakil, the captain of Sindh. So we've got our 2 finalists of the Kingdom Valley National T20 2022, and it's going to be KP versus Sindh tomorrow. Don't forget to join us. That's all from the presentation. Thank you very much, Sikandar Bakht. And this is what we have for you for tomorrow. The final, the big one. It's KP taking on Sindh live from Multan Cricket Stadium. And we'll be on air by 7:10. Until then, it's goodbye.